Hi guys, good evening. Good evening, sir. Yeah, Good good evening, evening. sir. Good evening, 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 good evening. Hello. So, guys, on yesterday we have completed arrays and objects, right? So now we have a clear understanding of how the data flows from one function to another function. So I'm going to set the screen. Okay. So here we have cleared all the topics of our Facebook clone application, where how the data flow from one function to another function. So we have some thing. Okay. Yes. सर वो जो फेसबुक क्लोनिंग वाला पेज है उसको हमने मतलब कुछ चेंजेस करके फिर से रिक्रिएट किया है और जब हम इसको लॉगिन कर रहे हैं ना सही आईडी से क्योंकि हमें मतलब कंसोल के बगल में जो एक ऑप्शन रहता है मींस सारा कोड हमारे शो कर रहा है वहां पे. Okay. So give me 1 second here. So we have already discussed about how data flow from one function to another function. So here when we call our silent function, so when we provide some parameters here, and okay, now no, this is not your application. Where is your application? I think something. Yes. So here, when we call our login function and provides username and password, and now inside a function, we call some another function to check either user and password is correct or not. If the user and password is correct,
then he gives you it gives you the access of news feed, otherwise else condition returned, right? So now we have a clear understanding of how the basic JavaScript works. So for example, we have something, yeah. So this is our section outline. So most of the topics now we have a clear understanding, like JavaScript types. Apart from that, JavaScript comparisons, JavaScript variable, how to define any variable with var keyword, then conditions, then after logical operators. Apart from that, a function, when a function returns something, then function has been executed and it is pop out from the call stack. Apart from that, we have also covered array and objects, which is a JavaScript data structures. And we also covered the looping techniques like do, while, and for. Okay. So now we have a clear understanding of why we need of loop, or why we implement loop. For if we have an array, then we have to access all the elements of the array. So on that particular cases, or that kind of cases, we need a looping. So looping is what function or an instruction is repeated again and again, unless the your condition is not mismatched. Okay. So now we have a clear understanding of all the basic JavaScript फंक्शनैलिटीज की कैसे जावास्क्रिप्ट में चीजें रन करती हैं, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी हो गई है. ओके, किसका ये डाउट था कि उसके console.log फंक्शन रिटर्न कर रहे हैं? सर मेरा एक बार जल्दी से स्क्रीन शेयर कर दो. जी सर. ओके, सो सबने एक बार खुद से कोड करके देखा है? यस सर. Sir. Yes, sir. स्क्रीन विजुअल है? यस. Yes, sir. ओके, यू एंटर्ड रॉन्ग इवेंट पासवर्ड. सर यहाँ पे चला जाता है, मतलब फिर से कर रहे हैं, एक सेकंड दीजिए. Check your email is correct or not. सर ये देखिए. Okay, so there is some issue in your loop. So go on your code. सर ये है. And where is your code? Where is your file? तुमने डिबगर तो नहीं लगा रखा है ना? नो सर. सर ये है कोड. हाँ, okay, ठीक है. You have a data to get and user login. So where is your loop? Loop कहाँ है? सर ये. Okay. So here, wrong user with user and password. I is smaller than. Okay, user login dot length. And what is a user login? User login is an array, right? Of database. यस सर ये है. Okay. So आना एक बार loop में आना. सॉरी, मेरा नेटवर्क चला गया था. यस. ओके, एंड पासवर्ड रिटर्न ट्रू, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स. तो आई थिंक इशू तो नहीं है. एक बार कोड एक बार ब्राउजर पे दिखाना, यूआई दिखाना.
आई थिंक तुमने कुछ डिबगर लगा रखा है. डिबगर का ही इशू है सर, और देखो ना ऊपर दिख रहा ये कैसे हटेगा? है. ये एक बार कंट्रोल शिफ्ट आर करना, हार्ड रिलोड करना. कंट्रोल शिफ्ट आर. ओके, अब एक बार ये practice.js बंद करो. practice.js बंद कर दो. अभी तो कैंसिल कर दो इसको. सर कर दिया. हाँ, तो अब फिर से उसको वहां से खोलना, फिर से खोलना. ओके, यस, डालो. कॉपी कर लिया करो ना भाई. यस, यू आ गया. गेट द एरे, राइट. तो डिबगर का इशू था, मैंने लगा दिया था. ठीक है, स्टॉप करो, हो गया ना. Okay, so now I'm going to share my screen, and today we are covering a very important topic of JavaScript, which is basically a DOM. We have heard a lot of times DOM. So now we are going to cover what is basically a DOM and what is the benefit of using DOM and why we uses DOM. So DOM is a very important topic from JavaScript perspective. So now we are going to cover exactly what is the principle of DOM and what is DOM, all the things. Okay. So let's start. What is DOM? So I'm going to zoom in my screen. Okay. So basically DOM is document object model. DOM is what? Document object model. So बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछते हैं कि what is DOM. So first it stands for document object model. So basically what is the benefit of using DOM and what is exactly the working principle of DOM, ये हम समझेंगे. So basically when a page is loaded, the browser creates the DOM, which stands for document object model. It means जब भी आपका वेब पेज, when your web page, something like I'm just going to load this web page. So when it loaded on the browser, any browser which you used, that it creates the DOM, which stands for document object model. So who creates the DOM? So your browser creates the what? A DOM. Right. So when you load any website, something like I am going to like flipkart.com. So when I hit the enter, then Flipkart website is now what? Loading on your browser. So what happens? Browser creates the DOM for each web page which is loaded. Is it clear now? Any web page is loaded, the browser, what is your browser? Here it is the browser. If it is Microsoft Edge, if it is a Chrome, then it creates the DOM, which stands for document object model. Okay, so suppose I'm going to console. What is document? What is document? So it is like DOM. Yes, it creates the DOM. Who creates the DOM? Then browser creates the DOM for what? For web page which is loaded, which is just loading. So your browser creates the document object model for that web page. But what is document? So what document means? Something I'm just going on any web page. I'm just going to Control-Shift-I. Just write document. Here, document is what? A document is what which is loaded on your screen. Something like all the HTML body is what? A document. So
जब भी वेब पेज लोड होता है, तो जब आप एलिमेंट्स में आते हो तो आपको ये पूरा HTML टैग दिख रहा होता है, जो भी ब्राउजर पे क्या होता है, लोड हो रहा होता है। एनी HTML पेज इज लोडेड ऑन द ब्राउजर, तो वो क्या होता है कि वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है। तो व्हाट इज डॉक्यूमेंट? तो डॉक्यूमेंट इज समथिंग, document is an object where all the entire contents of HTML is loaded. तो document क्या है? एक object है जो कि आपके HTML and CSS को क्या करता है, कंटेन करता है। ओके, तो what is the need of DOM? तो DOM का नीड क्या है? The DOM is something a browser creates to allow us to modify the HTML and CSS. It is a very important point. What is the need of DOM? The DOM is something a browser creates to allow us to modify the HTML and CSS. It means if you want to modify HTML and CSS, then who helps you? Then DOM helps you to modify all these stuffs. But point is that we can modify with our normal HTML code. We can modify with our HTML code. Yes, we can modify, but we want a user can modify, how a user can interact with your website and modify the HTML tag. कोई भी यूजर आपके वेबसाइट पे आए, उससे इंटरेक्ट करे और आपके HTML और CSS को मॉडिफाई करे। तो इस चीज के लिए who helps you? तो DOM helps you. तो DOM यहाँ पिक्चर में आता है कि DOM helps you to modify all the HTML or CSS codes which are loaded on the screen. Is it clear? Yes, sir. Is it clear, na? So Yes, sir. suppose it is like I am just going to on Google browser, and here I just type something and anything you want, like Samsung. When I hit the enter, then now the entire content of the web page is what? Changed. And why it is happening? If I just hit the enter button, then it loaded the another web page with Samsung data. So entire HTML and CSS content has been what? Changed. And why it is changed? Because your DOM have capacity to update your HTML or CSS. तो इतना समझ में आया ना? Yes, sir. Sir. Yes, sir. समथिंग यहाँ भी अगर ये कुछ भी आ रहा है गूगल पे, ये सारी चीजें आ रही हैं, ये भी तो कोई HTML एंड CSS ही तो होगा, ये भी तो कोई HTML और CSS ही तो होगा, है ना? तो अब Yes, sir. when I load this page, the entire content of the HTML or CSS is what? Changed. जब हम इनपुट में कुछ क्लिक डाले थे just like Samsung, and when I hit the enter, it means I give some like what? Instruction to DOM, please modify my web page according to my need. So this is my need, please modify it. When I hit the enter, DOM takes the task and just perform an action and change the entire content of what? DOM, because another web page is now loaded on the screen. So entire content of the HTML is changed. And why it is so? Because with the help of your what? DOM. Okay. So it means आप लोग ये बोलोगे कि सर आप इसका मतलब ये कहना चाहते हो कि DOM, अगर if the website is static, then it is made by HTML and CSS, right? But when we want to give some interaction on your website, when you want to implement some interaction on your website, then it is happen by what? Your DOM. तो अब यहाँ एक पॉइंट आया कि अब आगे बढ़ते हैं। तो समथिंग लाइक if I want, this is my entire web page and I'm just going to on console.log, and this web page have the on document, and this is what? Entire document of your web page. I can write something like document dot write, and here I just pass hello.
oh my god, your web page is now changed to what? This, only this element. Your Google has been gone from your screen and entire content is changed to body what? Hello. तो यहां क्या हुआ कि because you can access the properties of access the method or any property of object with this dot notation. So here document dot write, it means what? Write is a method which is defined in your what? Document object. So when you write document dot write hello, the entire content of the all the HTML is changed to what? This hello hello keyword. Is it clear now? So document is what? An object which have a multiple properties. So what is document? So document is an object which have a multiple methods or a multiple key values. So this is what you can simply say you have a object which have the multiple key value pairs. Okay. तो अभी तक इतना तो समझ में आया कि DOM क्या करता है? The DOM is something a browser creates to allow us to modify the HTML and CSS. Okay. Now we have one point. Each browser loads up the JavaScript and it is magically read it. Okay. इसके पहले मैं कहीं और पहुंचता हूं. अभी तक तो समझ में आ गया कि if you want to change the content of HTML or CSS with what? By your user, then it is for this cause we have to use what? DOM. So what are the benefits of using DOM? So DOM change all the HTML elements in the page. आपके HTML elements को change करता है. DOM change all the attributes in the page. आप HTML के साथ जो भी attribute use किए होंगे वो change कर सकता है. Change all the CSS styles in the page. ये आपकी CSS स्टाइल को क्या कर सकता है? डायनामिक कर सकता है. रिमूव एग्जिस्टिंग HTML एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट. आपकी एग्जिस्टिंग HTML एलिमेंट और एट्रीब्यूट को क्या कर सकता है? रिमूव कर सकता है. न्यू HTML एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स को ऐड कर सकता है. And sixth important point is JavaScript can react to all the existing HTML events in the page, and then JavaScript can create new HTML events in the page. It means कि DOM के हेल्प से आप अपने JavaScript को कनेक्ट कर सकते हो for किसके साथ? With HTML and CSS. Without DOM, you can't interact your HTML and CSS with what? JavaScript. Is it clear? Yes, sir. अभी तक हम ये कह रहे थे ना कि यार तुम लोग भी कह रहे थे कि सर आप console.log कराते हो, आप ब्राउजर पे जाके कोड करते हो, या नॉर्मल स्क्रिप्ट की फाइल आप जस्ट लिखते हो और वो आपकी कंसोल में प्रिंट होता है. बट माय क्वेश्चन इज कि व्हाई यू नॉट लाइक हैंडल HTML एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट टुगेदर. इन तीनों को आप एक साथ कैसे क्यों नहीं यूज करते हो? तो मैंने बोला था कि व्हेन वी रीड समथिंग अबाउट DOM, देन वी कैन इंटरेक्ट योर आवर HTML एंड CSS इज व्हाट with what? Your JavaScript. So with the help of DOM, we can interact our HTML and CSS with what? JavaScript. Yes, Prakash. सर हम जब HTML और CSS से वेबसाइट बना रहे थे तब होम पेज या फिर अबाउट सेक्शन वहां पे भी क्लिक करके तो हमारा मतलब इंटरेक्टिव पेज बन रहा था ना. सो DOM का यूजेस मतलब सेम ही है क्या इसकी तरह ही है? लाइक तुम जो क्लिक करके करते थे, अगर HTML CSS की बात करोगे तो वहां पे आप क्या करते थे कि आप बस आपके पास एंकर टैब था जो कि आपको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करता था. दिस इज योर HTML प्रॉपर्टी. तो वो तो HTML की एक अपनी प्रॉपर्टी है. बट व्हेन यू जस्ट व्हेन यू यूज बटन, और आप जब बटन पे कुछ भी चेंज कर देते तो उसके कंटेंट को चेंज कर पाते थे, बट उसके साथ आप फंक्शनैलिटी को हैंडल नहीं कर पाते थे. तो वहां पे जब आप JavaScript, it means what? It gives you a functionality to do some action. Then if you want to interact your JavaScript with your HTML and CSS code, then you must have to implement DOM integration with what? Your HTML and CSS with your JavaScript. समझ में आ रहा है? जब अब ये तुम्हारी दूसरी क्वेश्चन होगी कि सर बूटस्ट्रैप वाले में तो हम तो क्लिक भी कर पा रहे थे अपने टॉगलर बटन पे, है ना?
या Yes, sir. ये भी कह सकते हो कि कैरोसेल पे जब आप क्लिक करते थे तो वो दूसरा आइटम लाके भी दे देता था. हाउ कैन इट पॉसिबल विदाउट जावास्क्रिप्ट? तो बाय यूज दैट. या सर उसमें ना बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के लिंक वहां पर दे रखे थे, तो वो हम कॉपी करते इसलिए. करेक्ट, यस, क्योंकि हम जेएस की मिनिफाइड वर्जन क्या कर रहे थे, लिंक से कॉपी कर ले रहे थे. तो योर एचटीएमएल एंड सीएसएस किससे कनेक्ट हो जा रहा था? जावास्क्रिप्ट की एक मिनिफाइड वर्जन से, जिससे क्या हो रहा था कि वो इंटरेक्शन हो रही थी विद द हेल्प ऑफ jQuery और समथिंग लाइक जावास्क्रिप्ट. तो बट आप नॉर्मल HTML CSS में आप बटन कहीं भी बटन यूज करोगे, कहीं भी कुछ यूज करोगे, वो आपकी डिजाइन को चेंज कर सकते हो, बट आप ऐसा नहीं कर सकते हो समथिंग लाइक कि आप उसके साथ जावास्क्रिप्ट के साथ फंक्शनैलिटी नहीं दे सकते हो. एक और एग्जांपल मैं दूंगा बहुत छोटा सा, और ये आज हम कोड भी करेंगे. तो डोंट वरी, जो भी हम चीजें सीखेंगे उसके लिए हम प्रैक्टिकल एक अपना कोड भी रेडी करेंगे, एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स भी करेंगे. तो आई एम Yes, sir. सिंपली सेड कि इफ यू वांट कि यू हैव वन इनपुट, you have what? A input and a one button. I want ki write something in your input box, and when you click on enter button, the item which you just entered in the input is listed out on your what? Browser. Something like to do application, where when you write something कि I have to do something, and when you hit the enter button, वो लिस्ट में क्या होता है, आके सेव हो जाता है. तो अब यहाँ सोचो, यहाँ क्या क्या चीजें आ रही हैं, ध्यान से समझना, सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा. That kind of things what you have. First कि when you hit the enter button, एक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हो कि जो भी हमने इनपुट में टाइप किया है वो क्या हो, लिस्ट के अंदर आ जाए. अब मेरी बात ध्यान से समझना, मैं क्या बोल रहा हूं कि वी हैव वन इनपुट and one enter button. When you write something in your input box and when you hit the enter button, वो जो आइटम आपने इनपुट में लिखा है वो क्या हो जाए, लिस्टेड आउट हो जाए, लिस्टेड आउट ऑन योर व्हाट, वेब पेज. तो समथिंग लाइक कि पहले से आपके लिस्ट में 2 आइटम्स हैं या एक भी आइटम नहीं है. When you write first item and hit the enter button, एक आइटम लिस्ट क्या हो गया, ऐड हो गया. Means what added? A HTML of list item is added. मेरी बात को समझ पा रहे हो? जब तुमने सेकंड आइटम क्लिक किया तो वो दूसरी लिस्ट आइटम बन गई. तो एक HTML का सेकंड नोड भी तो क्रिएट हो गया ना. when you hit third item तो HTML का थर्ड नोड क्रिएट हो गया. तो what I want to say कि you can add new HTML elements and attributes with what? A DOM. Or you can remove a HTML something like कि पहले अगर मान लो I am just suppose okay, give me a second. Okay, JS DOM. Okay, so I am going to, in this lecture where we have HTML, CSS and code, this is CMD code. Okay, now our page is open. So here we have our index.html. I want, suppose this is h1, and now I'm just giving something like this is input, and here input have type property, which is what, type attribute, which is what, text and placeholder, and this is what, enter your task, enter your task, and here one button, and button, this is your button, and this is what, submit. And now we have something like UL, and here in UL we have li. I have to go market, buy some snacks, right? Buy some clothes,
Okay. What is yes, no? Okay. Now, when I just open this index.html, okay, our script is running. So this is script 1, and now I'm going to just okay. So I'm going to comment all the various prompt. This is your prompt, okay. Yes. Now, so here, this is our HTML page where first item is hello from JavaScript. या मैं ये चेंज करके कर देता हूँ to do list, right? Okay. I want something कि when I write something, I have to play. Okay, I have to play, and I want to add this item here in your HTML. Your task is when you hit this submit button with this content, it now added to your list item. It's now added to your list item. But here we have only 3 list item. You want कि this is added in your HTML document, right? You want something like this li, and this is li, and when I refresh the page, when you hit the and submit button, you want something which I written in the input box is printed out in list format. So what you want to add a list node, a HTML node in your document. तुम यही चाहते हो ना कि when you hit the submit button एक HTML node क्या हो जाए, create हो जाए. तो who helps you to do this task? So your DOM helps you to add a new HTML element and attributes in what? Your HTML or your existing document. अब समझ में आ रहा है कि इनका मतलब क्या हुआ? Change all the HTML elements in the page, change all the attributes in the page, change all the CSS styles, remove existing HTML elements and attribute, add new HTML elements and attribute. So DOM helps you to what? To interact with this button. और interaction मतलब हुआ कि give some functionality to do. तो पहला काम हुआ कि when you write something and hit the button, it has some functionality which forms. So this functionality is what? The functionality is done by your what? DOM. Without DOM, it can't be possible. तो DOM क्या करता है कि आपकी HTML और CSS से क्या करता है? कनेक्ट करता है, और फंक्शनैलिटी जो भी आप दोगे वो फंक्शनैलिटी वो क्या करेगा? इंप्लीमेंट करेगा. तो अब फंक्शनैलिटी तो कुछ भी हो सकता है. यू वांट कि कुछ ऐड हो जाए, HTML नोड ऐड हो जाए, यू वांट कि HTML नोड डिलीट हो जाए, यू वांट समथिंग एल्स. तो ऑल द थिंग्स आर व्हाट? कवर्ड बाय योर DOM. तो नाउ इट इज ओके. समझ में आया? Yes, sir. इज इट क्लियर Yes, फॉर ऑल ऑफ? यस सर. सर जैसे अभी आपने बताया कि DOM फंक्शनलिटी को शो करता है, तो वो जावास्क्रिप्ट के साथ कनेक्ट हो जाता होगा ना तभी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो फंक्शन के लिए यूज करते हैं हम. Exactly. So your HTML and CSS, when you loads your web browser, एक document बन जाता है, which is what? A document. जब एक ये document बनेगा, something like when it is document, entire web page is what? A document, a single document. अब इस डॉक्यूमेंट क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर डिफरेंट फंक्शनैलिटी, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो क्या करता है? आपके HTML एंड CSS को किससे कनेक्ट करता है? जावास्क्रिप्ट से. और जावास्क्रिप्ट से जब वो कनेक्ट करेगा तो ये DOM हेल्प करेगा. इट मींस कि योर HTML, व्हेन योर HTML एंड CSS इज कनेक्टेड विथ जावास्क्रिप्ट, इट ओनली हैपेंस विद द हेल्प ऑफ DOM. ओके सर. Is it clear? अब यहाँ क्लिक Yes, कर रहे हो means what? You interact with your HTML button and wants to give some functionality, and this functionality is given by what? JavaScript, and this is your HTML tag. But इन दोनों को जो कनेक्ट करेगा वो कौन कनेक्ट करेगा? DOM कनेक्ट DOM. करेगा. Without DOM you can't what?
interact your HTML with what? A JavaScript. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Nice. Okay. So now we are going to explore something more about DOM. So I have already said that what, अब यहाँ से समझना, अब यहाँ से थोड़ा और अच्छे से clear होगा. Each browser have JavaScript engine. Every browser have what? A JS engine. It depends on which which browser you used. If you use the Chrome browser, then you have what? A V8 engine. Similarly, if you use Ace browser, then it have another JavaScript engine. So JavaScript engine totally depends on what? Which browser you use. So each browser have JavaScript engine that looks the JavaScript what? File and read it line by line and execute the JavaScript. So what your engine do? JavaScript engine takes a look on your JavaScript file and read it line by line and execute the what? A JavaScript. So what happens? You have something like Chrome browser and you have JavaScript engine, which is now V8 engine for the Chrome browser. So V8 engine have capacity to what? Execute JavaScript file. V8 engine have capacity to what? Execute JavaScript. And Chrome have what? Your HTML and CSS codes, which are displayed on what? Your browser. So with the help of DOM, you can connect your something like V8 engine, which executes your JavaScript file with your what? A browser. So जब हम ब्राउजर की बात करते हैं तो ब्राउजर पे HTML and CSS ही शो कर रहा होता है, either in any form. If you look on your browser, it shows you what? HTML and CSS, nothing more than that. It may be in different form, like if you are using Bootstrap, you are using something, anything like XML, then it is what? Your HTML and CSS. So जब ब्राउजर पे कुछ भी दिख रहा है वो HTML and CSS दिख रहा है, क्योंकि जो आपने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा है, जो फंक्शनैलिटी आपने डाली है, वो कौन रीड करता है? योर V8 इंजन. इट रीड्स योर जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट एंड व्हाट? एंड एग्जीक्यूट्स द योर प्रोग्राम्स लाइन बाय लाइन. एंड नाउ फॉर कनेक्शन, DOMs comes in the picture. So your browser gives you a document, which is what? Document object model, and it helps you to connect your HTML CSS with what? Your V8 engine, where your JavaScript files are. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Nice. सर जैसे क्रोम के लिए V8 इंजन है, ऐसे ही हर ब्राउजर के लिए डिफरेंट इंजन होते हैं. Yes, आपके लिए हर ब्राउजर्स के डिफरेंट इंजन्स होते हैं. लाइक माइक्रो, आई डोंट नो कि कौन सा इंजन यूज होता है, बट ब्राउजर क्रोम के लिए तो V8 ही यूज होता है. आप लोग सर्च कर सकते हो. राइट, ओके. सो इन विंडो वी हैव एन ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट. ओके, तो हमने डॉक्यूमेंट की बात कर ली है कि जब भी आप कोई भी विंडो खोलोगे और जब आप डॉक्यूमेंट करोगे तो ये पूरा आपकी उस ब्राउजर पे जो भी HTML एंड CSS लोड हो रहा है वो सारा कंटेंट एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा. अब यहाँ की वैल्यू में नहीं आ रहा है, बट आप इसको समझ सकते हो कि दिस इज दिस इज एन ऑब्जेक्ट बिकॉज यू हैव समथिंग लाइक document.write, document.read, ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं. अब यहाँ समझना, a web browser has the window object. A web browser has the window object that has property document that specifies what should get displayed. So any web browser have one global object. Any web browser have one global object. If you are using Windows, then when something like console.log, and I'm just going to console.log what? Window. What? Window. So when I console.log window, it gives you an entire window object. So a global object is what? A window object. So when you load the browser, every web page have one global object, which is what? Window. So window have a different properties. Inside window, we have one property which is document. So just find the document. Yes, we have one property, what? Document.
So inside document, we have some another properties like we have URL, we have the applets, we have a base URI which gives you the path of the web page. We have a child nodes, we have a children, we have a compact. There's something more जो कि हमें बहुत सब कुछ नहीं जानना है, but we have a something. तो अब क्या हुआ कि अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो वो डॉक्यूमेंट कहां से आ रहा है? विंडो से आ रहा है. तो फॉर विंडो अगर समथिंग लाइक आप अलर्ट यूज करते हो ना, Yes, sir. देखना तो ये अलर्ट कौन दे रहा है? तो ये अलर्ट भी जो होगा ना, समथिंग इफ यू राइट विंडो डॉट अलर्ट, गिव मी अ सेकंड. Okay, so here if you write window.alert, it does same thing because alert is also the method which is defined in your global object. So when anyone say what is a window object, so window is a what? A global object for the web page. So if you write alert, your browser understands that you call what? Window.alert. समझ रहे हो ना? जब भी आप अलर्ट कॉल करोगे या प्रॉम्प्ट ऐसे फंक्शंस को कॉल करोगे तो आपका विंडो समझ जाएगा कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड इन माय ऑब्जेक्ट. सो इफ यू राइट अलर्ट और विंडो डॉट अलर्ट, इट मींस सेम थिंग. सो जब भी आपका ब्राउजर लोड करेगा तो एक फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है विच इज व्हाट? अ विंडो ऑब्जेक्ट. इन विंडो ऑब्जेक्ट वी हैव वन मेथड विच इज व्हाट? डॉक्यूमेंट. सो समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं ये बताने के लिए बताया sir. कि आपका ग्लोबल ऑब्जेक्ट कौन होता है? विंडो. इसके अंदर ही ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं. विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, आप प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हो. सिमिलरली अगर आप डॉक्यूमेंट लिखते हो तो योर ब्राउजर अंडरस्टैंड्स दैट यू कॉल व्हाट? विंडो डॉट डॉक्यूमेंट. एंड इफ यू वांट टू राइट समथिंग लाइक हेलो, देन okay, window dot document. Okay, sorry. So what we have? Window dot document and dot what? Write property. I will talk about this, don't worry. So I want hello. Now I'm just giving the hit. Then what? It changed the entire HTML tags to what? A single hello. It replaces your what? Entire HTML to hello. So अब तो समझ में आ गया होगा कि DOM is something which just helps you to connect your HTML and CSS with what? A JavaScript. So what are the some characteristics of the document object model? So we have some characteristics. आप बोल सकते हो we can change all the HTML elements and something, these 7 points. You can say that for the characteristics of the document object model. So now the last point. The document object model reads the HTML and CSS. अब देखना, the document object models reads the HTML and CSS and then JavaScript. That is read by line, something like JavaScript engine in Google Chrome, that is V8 engine, right? So HTML, CSS is read by what? A document DOM. And after that, JavaScript is read by line, किसके through? With your JavaScript engine, which is in Chrome, which is a V8, and reads through it. And if it ever needs to change anything, JavaScript can speak with the document object and modify the HTML, CSS. Like अगर JavaScript का कोड आपने लिखा है, उसको आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कि just remove this item from the what? DOM. तो JavaScript के पास जाएगा, DOM के पास जाएगा, and it just says what? Please modify this line of HTML and CSS because I have some instruction which user gives me. So your browser reacts as per the instruction which JavaScript gives it, right? Now you have a clear understanding of what is DOM. Yes, sir. Yes, sir. कोई है? Yes, sir. विपिन, विद्या बताओ, रंजीत. Yes, sir. समझ रहे.
Yes, sir. Understood. Yes, sir. तो नाउ वी अब हमें समझ में आ गया है कि जब भी हम स्टैटिक वेबसाइट की बातें करते हैं तो वी ओनली राइट HTML and CSS. And now when we talk about the dynamic websites, then JavaScript comes in picture, and when JavaScript comes in picture, you have something which is DOM. So it helps you to interact with your JavaScript to HTML and CSS code. Okay, nice. Okay. So this is what I want to say. Now I'm just going to close this one. And here we have something. Okay. Okay. So let's start with something. Yes. Okay. Yeah. So now in DOM, basically we have two things. One is what? Yeah. One is what? DOM selectors, and second is what? DOM events. So ध्यान से देना, ये देखो अब क्या है ना कि we are on our mid of the JavaScript, and if अब अभी तक हमने फंक्शनैलिटी सीखी है थोड़ी बहुत, हमने एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स के साथ डेटा के साथ मैनिपुलेशन सीखा है इन JavaScript. Now we are going to connect all these steps with what? Your HTML and CSS. तो स्टार्ट करते हैं. So in DOM, we have basically two things which we have to cover. First is DOM selectors, and second is what? DOM events. So these are the two most important topics from the DOM perspective. So what is selectors and what is events, how they combine with each other, and what is the benefit of using these two things? So we are now going to talk about these things. Okay. So basically, what we have, yes, we have something HTML, CSS. Okay. Now, I'm going to cover some DOM selectors. And what is DOM selector? So something, if this is your browser, I'm just going to refresh my page. Okay. So now, we have some HTML and CSS code, right? We have H1 tag, we have input tag, we have button, we have UL, we have some LIs, we have a script which connects your script file to HTML and CSS file. So what are selectors? Selectors are something in DOM which selects the node of the HTML tag. What it means? What it means? I'm saying something. DOM selectors are something which selects the HTML node to which helps to perform an action on that particular node or group of nodes. What it means? So definition से समझ में आ रहा होगा. DOM selectors are something which selects the HTML node which helps to perform an action on that particular node or group of nodes. So what it means? I want to say that these are nodes. What are nodes? H1 is node, input is node, which is what node means. Something like I'm just going to browse something, HTML nodes. Okay, nice. So here, when I talk about HTML nodes, my screen is visible.
Yes, sir. Okay. So I'm just, Sir. yeah. So now I have, what, यार, ये marketing इतनी करते हैं ना सब. Yeah. So this is something your HTML, like this is document. This is what? A document. This is what your HTML root element. This is head. This is body. This is title. This is anchor. This is H1. This is something, anything you have just give. So these all elements are what? A Node. individual node. Like HTML is a node, head is also a node, body is also a node. So in our example, head is also a node, body is also a node, H1 input button, UL, LI, all things are a separate node, which is in which all are in what? A single object, which is what? A document. Which is what? A document. तभी तो मैंने बोला कि when you load your web pages, then it what? It creates a document for us. And document is what? An object. So when your page is loaded, then all the HTML tags are just defined something like this. So all the nodes are inside your document object. Yes. Now, what are selectors? So DOM selectors are something which selects the HTML node. It means if I want to give some functionality to this button, and if you have a like 10 buttons, something like second, third, right, fourth, fifth, yes, you have a multiple buttons. So you have a multiple nodes, right? So if you want to perform some action on that particular node for that button, then how can you perform that? So first thing is that you have to select this node. You have to select this node कि तभी तो आपकी JavaScript को समझ में आएगा कि yes, this functionality is attached to what? This button, not for this button, this button. So first work is that कि you have to select the DOM element. So you have to select the HTML node. So with the help of DOM selectors, you can select HTML node, which helps to perform an action on that particular node or group of nodes. If you want to perform some action on that list of all the items, then what? You have to select all the list items first, then you have to give some functionality to it, right? The first thing is what? You have to select the HTML node. Is it clear? अभी तक Yes. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, nice. Yeah. ठीक है. Now I'm closing it. Okay, so we have some selectors. What are these selectors? So we have selectors like get elements by tag name, get elements by class name, get element by ID, query selector all. These are the some selectors which helps you to select what? The Node. HTML node. Nice. Okay, so let's start with I want. Our first selector is get element by tag name. So I want to select what? Our first something H1 tag. So tag name is something which is defined in what? A HTML element. If I talk about tag name, so input is tag name for what? This input element. Button is what? A tag name for button element. So if I want something to just select this item, how can I do that? So I have document dot what? Get Element. element by what? Tag name. And I'm just selecting this H1 element. Now, when I hit the enter, okay, get element by tag name. What is wrong in it? It's going to refresh the page.
Okay, sorry, I have one issue. So document dot get elements, देखो यहाँ एक s होता है, element नहीं होता, elements होता है, elements by what? Tag name. So document dot get elements by tag name, and here I have to pass what, which tag name I want to select, h1. So you have to pass a string with get element by tag name, and now your h1 is what? H1 is what? Selected. So here we have, like, if you use get element by tag name, it returns you a list of array, all the h1 tags which is on your browser. Is it clear now? If you write something like h1 and to do list again, so when you refresh the page and you write something like document dot get elements by what? Tag name, and you pass something like mute kar lo, h1. Yes, now we have two items in your array. ये कौन है? Mute कर लो. Also mute कर लो. Yes. So if you have two h1 tags or two tags or 5 tags in your web page, then all the h1 tags are just what? Just selected, and it gives you an array. Is it clear? किसी को कोई? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, please. I Yes. have a question. जी बताइए. सर आई हैव सर जैसे कि यहाँ पर H1 हमने टैग सेलेक्ट किया तो जितने भी H1 टैग्स होंगे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे ना? Yes. से मेरा भी एक क्वेश्चन हाँ, था तो सर। सारे हो जाएंगे. हो नहीं क्या? अभी आपके वेब पेज पे 2 h1 थे ना 2 h1. तो यार सो अगर H1 H2 भी देखना हो सर हमें तो एक्चुअली H1 के ही साथ में अगर H2 भी करना हो तो अपने को सेम ऐसा ही करना पड़ेगा अपने को, या उसके अंदर ऐड कर सकते हैं? उसके अंदर आई थिंक तुम समथिंग ऐसा कुछ बोल रहे होगे कि यहाँ तुम h2 भी पास कर दो. देखो ये हाँ, पैरामीटर yes. लेता है. Yes, so if I'm just going to define here h2, right? And Yes, sir, hello right. again, refreshing, and now I'm just copy this entire thing and just paste. Okay. No, so it not takes second argument because it only returns the h1 element. So if you have to select the h2 element, then you have to do like what? Document dot get elements by tag name, and when Just again I am writing this name. got, yeah, yes. So second is, what if you have this h2 and here it have some class name, and this class is typo, and now I am going to write some what style for typo. Okay, I'm not going to give. I want to select this item. I want to select this h2 tag with the behalf of what? Class name. So initially we have selected all the items with the tag name. Second is what? Class name. So when I just go document dot what? Get elements By class name. by Class name. class name. So here I have to pass what? Class name. So what is our class name? Typo is our class name. So I'm just going to get elements by class name and typo. It not takes. Okay. Give me a second. Elements by class name, and when I pass something. So why our class name is not working? I have to check it. So H2 dot करना होगा क्या? नहीं ना? नहीं. I only have to pass the class name.
something like this. And here in our page, give me like this. I'm just going to try in Chrome browser. Okay. And here I'm just going to document dot get elements by class name. Here, passing what is typo, right? Oh yes. Now it returns because yes. Okay. So here, when I write document.get element by class name typo, it returns the one element with this class name. And what it returns? h2 dot typo. So yes, we have a h2 element with what? This class name. So if you write something like this class name is also for this h1. So what happens if I just copy this again? And now I hit the, just refresh the page. Yes, so now it returns one h1 typo and one h2 typo. So all the class names are what? Just selected with what? Get element by class name. So we have two typo, for one for h1 class and one for h2 class. So all the class names are selected. Is it clear ना? या कोई Yes. दिक्कत है? अब एक इशू था कि सर ये इस ब्राउजर पे काम क्यों नहीं कर रहा था? तो here one thing comes in picture, which is what? Browser compatibility for like get element by class name. So yes. I'm checking the browser compatibility. So for this elements by class name, I released not supported. Firefox पे नहीं होता है, इस पे चलना चाहिए. मे बी कैश्ड का इशू होगा, कुछ कैश्ड मेमोरी का इशू होगा, तो इट मे बी इसके लिए नहीं चल रहा होगा. ओके कोई नहीं, तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. तो मैं आपको बता रहा था कि अभी तक हमने दो सेलेक्टर्स पढ़े हैं. फर्स्ट सेलेक्टर इज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय व्हाट? tag name, get elements by tag name, and second is what? Get elements by class name. So Class now name. we have we know about two selectors. Third selector is I'm going to give something like ID, and here I pass something ID. What is this ID name? So typography ID, something like this, right? Okay. Now I have third selector, which is what? Document dot get element by ID. Okay. अगर आप document dot get element by class name जान रहे थे तो वहां पे elements था. Reason behind कि your class name may be plural. सर क्योंकि आईडी शायद हम लोग एक ही उसको आईडी सर यूनिक होता है ना. तो नहीं दे सकते. Yes. यूनिक आईडी होता है ना. Yes. जी. So this is our ID. I just pass this ID, close this bracket, and now yes, we have selected this node, the H1 node, which have the same ID. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now we have a understanding of these three like DOM selectors. We have discussed about these all DOM selectors. So now we have also these selectors. So what are the benefits of using this? Fourth is query selector. So now I'm just going to write something, document dot query selector, and here in query selector I'm just going to pass, I have to select all the items, all the tags with list tags. I want to select all the list tags. So I have to pass li. Now it is closed. And yes, it selects the list. But here we have one more tag, which is what? Document dot query selector all. And I have to I pass something this list here.
and it returns all the list items in what? Your in your HTML. But here it returns only one list item. Why it is happening? So there's one difference between query selector and query selector all. So query selector returns that node which matches the first condition. So if the list is, this is the first, like, yes, I have to go market. So when it matches the first condition, it returns the first node. लाइक जब भी आप क्वेरी सेलेक्टर चलेगा तो ये जब जैसे इसको पहला आइटम मिलेगा वो उस पहले आइटम को लाके तुम्हें क्या करेगा? दे देगा. बट क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है कि जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं वो सारे लिस्ट आइटम्स को एक एरे के फॉर्म में देगा. तो हियर वी हैव व्हाट? 4 आइटम्स इन द लिस्ट एंड दीज आर द 4 नोड लिस्ट. At 0 and text we have something I have to go market. Something like on one index you have something which is what? कहाँ है? Yes. So yes, buy some snacks. So all the list items are selected by query selector all. तो इतना समझ में आया. तो सर ये टैग नेम और क्वेरी सेलेक्टर में क्या डिफरेंस है? तो क्वेरी सेलेक्टर भी आप यूज कर सकते हो, टैग नेम भी यूज कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट क्वेरी सेलेक्टर इज मोस्ट प्रेफरेबल. ओके, क्लियर है? अभी तक समझ में आया सेलेक्टर्स के बारे में? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. ओके. Okay, so now I have something which is okay, yes, here, yeah. So now I am just going to add some random attribute here. This is random, its name is random. You can do whatever you want to put, you can put. So random, and I am just going to assign some values here for this random variable. For this random attribute. So I'm just going to pass 1000. And I want to modify, because I said that we can modify the HTML node, we can add the HTML node, we can delete the HTML node, we can modify the what? HTML node or the HTML attribute. So yes, we can modify. So we have something like in browser, I am going to use for what? This is your list item. So now I am going to document dot query selector, and here I just go to pass this list. Okay, and now I have the list item access. So now I can use this what? This get attribute to getting the attribute value. So I can use get attribute, and here I can pass what I want to select. I want to select this random attribute. So this random attribute with what? This get attribute property. So document.query selector li, it means it selects the first item of the list, and on the first item of list I want to select what? This attribute. So with the help of get attribute I can select this random attribute. So now I set this document.query selector li and get attribute random. Now I can set their random property value. So only I have to change. I can use on the place of get, I use set attribute, and I can pass as a second argument. First argument is यहाँ पे value क्या है? 1000 है. तो I can pass something like 2000 for the value. And now when I hit the enter and just write document dot query selector, and I am just passing what? List. So now it gives you the random value, which is what? A 2000. Initially ये क्या था?
attribute की value 1000 थी, but it changes the attribute value to what? 2000. तो इससे क्या समझ में आ गया कि आप HTML के एट्रीब्यूट की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप मॉडिफाई कर सकते हो HTML नोड्स को, आप अपडेट कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो, आप उसके एट्रीब्यूट को भी मॉडिफाई कर सकते हो। इज इट क्लियर ना? तो अभी हमने क्या किया, सिलेक्शन करना सीखा है कि हाउ कैन आई सेलेक्ट एनी HTML node to perform some action on it. Is it clear now? Yes, sir. Okay, so now I am just going to yes. So yes, it is now feasible to understand the DOM, but we have some yes, this is our okay, no, this is not DOM. Okay, so now we understand about change all the HTML elements in the page, change all the attributes in the page. You can change the value of the attribute. Okay, remove the existing HTML. ये भी हम अभी देखेंगे. Add new HTML element and attribute. ये properties अभी हम भी देखेंगे. So the third point is what? Change all the CSS styles in the page. What? It can change the styling of what? Your HTML page. Okay. So how can you do that? So we have something. I want the document. This is your document. And with document, you have query selector. And you can select what? H1 tag. Right. Okay. You've selected this H1 tag. And it is now selected on what? Here. So now I can use dot style property with what? Your document. Okay. If I use something like this, it returns you and all these CSS styles. So when I hit the enter, yes, you have all these CSS properties attached to it, like border block. All these CSS properties are what? Clip path, and these are what? The CSS properties which are attached to what? Your document. So now if you want to change some style of that H1 with DOM, so you can do document dot query selector, and here I pass what? H1, and now with style dot, I can use any CSS property from here. So I can use background, and now the background is equals to what? I want red. I select the H1 tag and I want to implement some style on what? That H1 tag. So when I hit the enter, yes, now background color is attached to what? This tag. तो आप देख रहे हो background color क्या हो गया? Change हो गया. तो अब समझ में आया ना? DOM can modify your HTML tags, or it can modify the what? CSS properties which are implemented on it. Is it clear ना? क्या आप क्या कर सकते हो? Style भी modify कर सकते हो. But there is some problem. What are the problems? कि we know that HTML is for skeleton of the body, CSS is for the design, and JavaScript is for what? Your functionalities. Right. So what happens? There is something which is what? Separation of concern. So what is separation of concern? It means that you want that all the HTML things are in your HTML file, and all these CSS stuffs are done by what? Your CSS file. You can do something like this, but you don't want to what? आप मिक्स नहीं करना चाहते हो अपने HTML एंड CSS को, तो आप यहाँ से जो स्टाइल दोगे बैकग्राउंड, तो इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस. बट ये एक जानने के लिए आप समझ सकते हो कि आप किसी नोड को सेलेक्ट करके उस पर आप अपनी स्टाइल भी क्या कर सकते हो? दे सकते हो. यस. ओके. सो नाउ वी हैव समथिंग लाइक okay, something if I have like
Now how can you something एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ आपके पास एक स्टाइल सीट है, मैं एक स्टाइल बना लेता हूँ, something is what style dot css, and now I'm giving some random class name, any क्या कुछ बोल रहा हूँ, random css. Okay, this is your class name, and here I'm just giving something background color blue, font size would be 24 pixel, font weight would be like bold. Okay, so this is what a random CSS class, a class, right? I have not inserted in HTML file. This random class is not exist in what? Your HTML file. But I want to override from DOM. So how can we do that? So I'm going to write like document dot query selector, and here I pass what? H1 variable. It gives you the access of H1. But every time I have to write this code. So here we have some variable. We can assign this selector for with what? A single variable. I am supposing I am giving H1, variable H1 is equals to what? This document dot query selector H1. I am giving this. When I select this H1, I assign this all the things to what? H1 variable. Now, when I want to access this H1, we simply do what? H1, it returns the what? The selected node. So when I want to something like I want to override, I want to add some class name to it. I want to add what? A class name to it. Here we talked about we can add a class name. So how can we do that? So I simply do h1 dot class name is equals to what? What is your class name? So what is your class name? This is random CSS. So I simply do something random CSS. Now, when I hit H1, okay, random CSS is attached to it, but I think your index.html have a relation to it or not? Yes, it is. It have no relation. So I have to pass what? Style dot CSS is in href. Now I'm refreshing the page. Like I'm not going to refresh the page. So I am going to use H1, but it's not here. It's like okay. So variable H1 is what? Document dot query selector, and I'm selecting what? H1. Now we have H1, but okay. Now we have H1. So I'm just going to add a class name. So H1 dot what? Class name is equals to something like where is your class name? This is random CSS. Now I'm just going to paste this random CSS. Okay, yes. So random CSS is now applied to what? Your HTML element. So you can add a class name also with what? With what? Your DOM. So अभी तक हमने क्या पढ़ा है? We have talked about DOM selectors. So get element by class name, tag name, element by ID, query selector, all. How can you get attribute? How can you set attribute? How can you use style property? How can you use class name? Right? Okay. अभी के लिए तो इतना सही है.
इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सर यहाँ पर वेरिएबल h1 दिया है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है आई मुझे। ओनली असाइन द वेरिएबल टू दैट पार्ट। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने क्या किया है कि बार बार जो आप ये लिखते, तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल असाइन कर दिया कि अब h1 में ऑलवेज ये डॉक्यूमेंट डॉट कैरी सेलेक्टर h1 रहेगा। तो व्हेन यू कॉल h1 इट ऑटोमेटिकली सेज कि मुझे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर h1 करना है। ओके, जब भी हमें h1 में कोई भी चेंजेस चाहिए होंगे तो हम वहाँ सिर्फ h1 लिख सकते हैं, पूरा लिखने की Yes. जरूरत। लिखने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई आई हैव टू असाइन द वेरिएबल ना। हमें वेरिएबल असाइन क्यों करना होता है कि हमें बार बार उसको यस सर। लाना नहीं पड़े। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर, दिक्कत ऐसी तो नहीं आई, बट एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यस, प्रैक्टिस तो बिल्कुल करना पड़ेगा भाई। ओके, तो जब तक प्रैक्टिस करेंगे पता नहीं चलेगा ना। ये तो मैं वेरी फर्स्ट डे से ये बोल रहा हूँ कि कोडिंग इज समथिंग लाइक कि यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। लाइक अपने जिंदगी में बस एक आदत बना लो कि 2 घंटे कोडिंग करनी है, 3 घंटे 4 घंटे कोडिंग करनी है। अगर ये आदत नहीं बनाओगे तो ज्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाओगे, फिर वो चीजें ना उड़ने लगेगा। इट इज सिंपली समथिंग लाइक मैथमेटिक्स। आप मैथ प्रैक्टिस नहीं करते हो तो क्या होता है, मैथ भूल जाते हो। और जब टीचर सॉल्यूशन बता रहा होता है तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि यार कितना कूल था सॉल्यूशन है, इतना अच्छा सॉल्यूशन है। बट जब करने जाओ तो होता नहीं है ना। सर क्वेश्चन है सर। यस सर जो क्वेरी सिलेक्टर है उसे सीएसएस को मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है सॉरी मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया भाई। ये पूछ रहा था कि सर जो क्वेरी सिलेक्टर है उसे सीएसएस मॉडिफाई होता है। आवाज नहीं आ रही है विपिन, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो यस सर, ये पूछ रहे थे जो क्वेरी सिलेक्टर है उसका यूज सीएसएस को मॉडिफाई करने किसी के को लिए किया सुनाई जाता नहीं है। है सान? सर वॉइस बहुत स्लो हो रहा है। इससे पूछना चाह रहे हैं कि जो क्वेरी सिलेक्टर है उसको अरे अपन विपिन CSS को विपिन मॉडिफिकेशन एयरफोन यूज निकालो, कर सकते हैं एयरफोन क्या? निकाल के बात करो। सर ये पूछना चाह रहा है जो क्वेरी सिलेक्टर है उससे सीएसएस ही मॉडिफाई होता है या फिर और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। विपिन भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कोई आवाज नहीं सर सुन मैं बताऊं क्या पूछना चाह रहे हैं। सर जो हम्म। CSS, सर जो क्वेरी सिलेक्टर है उससे अपन CSS को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, और भी कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं क्या उससे? इनका मीन ये था पूछने का, CSS के ये अलावा। सब आप HTML के पूरे नोड का कंट्रोल आपके पास आ गया तो यू कैन डू व्हाट यू वांट। You want to add some, you want to give some class name, you can do. You want to give some ID name, you can do. बस तो उसके आगे सिर्फ डॉट स्टाइल CSS का यूज करना है तो CSS भी हमारी चेंज हो जाएगी। yes, so basically JavaScript is ना, JavaScript में जो भी है ना सब ऑब्जेक्ट ही है। तो when you have to, अब डॉक्यूमेंट भी क्या एक ऑब्जेक्ट है। तो when you write something document dot query selector all, it means what कि आप डॉक्यूमेंट के अंदर query selector all क्या है, मेथड है जिससे आप क्या कर रहे हो, टैग पकड़ रहे हो। And then if you want to apply something like class name, if you want to add some class name, you can add with the help of what, h1 आप वेरिएबल में ऐड कर लिए, h1 dot class name is equals to something, when it matches तो आपका वो क्लास नेम पकड़ लेगा। तो यू कैन मॉडिफाई योर HTML CSS विथ। तो पहला काम क्या होता है डॉम में, सेलेक्ट करना। अभी तक हमने सिर्फ सेलेक्ट करना सीखा, अभी मॉडिफिकेशंस आगे देखेंगे। फंक्शनैलिटी कैसे इंप्लीमेंट होगा वो आगे देखेंगे। बस अभी इतना समझ में आ गया कि वी कैन सेलेक्ट आवर नोड्स, HTML नोड्स with the help of what, a DOM selectors, and we can we can update our HTML or CSS, we can add HTML or CSS node inside what, DOM, with the help of what, a query selectors। तो आपने अभी ऐड करना नहीं देखा है बट इतना तो देख लिया है ना कि आप सेलेक्ट कैसे करते हो। आपको जब CSS लगानी थी आपने स्टाइल भी लगा दिया, आपने क्लास नेम भी ऐड कर दिया। आपको अब ये समझ में आ गया कि मुझे कोई भी टैग पकड़ना है, समथिंग लाइक कि if you have a 10 buttons and you want to select the third button, then you have some query selector। आप वहां क्या कर सकते हो, उस बटन को ID दे सकते हो, उस बटन को क्लास नेम दे सकते हो, है ना। उससे क्या कर पाओगे, उस बटन को क्या कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे। जब आप वो बटन सेलेक्ट कर लोगे, अब उसके ऊपर, अब यहां तक समझ में आ गया, जब आप बटन सेलेक्ट कर लिए, अभी तक आपने क्या सीखा है कि you have selected the any node of the HTML which is loaded on your web browser। Is it clear ना? यस सर। क्यों रो रहे हो सब यार?
यस सर क्लियर है सर। यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है सर। हाँ, रोना नहीं है। सर रो नहीं Clear रहा, है सर, बोल clear दिया है। पहले क्लियर है। ओके, ठीक है। ओके, so now we talked about query selectors. अभी actually जो important है मैंने बता दिया है, तो don't worry about class list. Okay, so now we have some DOM events and what it do. Okay, so I said that your DOM your DOM have two work. First is what? Select the HTML node. Select the what? HTML node and then fire some events on it. So DOM have two words. I'm just giving, like I'm writing DOM selects the HTML nodes. What? With the help of selector and then fire some event on it. Okay, what it means. First part is now clear. DOM selects the HTML node with the help of what? Selector and then fire some event on it. What it means. So now I'm talking about DOM events. So what is DOM event? So JavaScript listen to events and act based on what the user does. If we click, hover, mouse, entering over something, or user trying to search anything in search bar, so we can listen these events and react to them using JavaScript. Okay, so what DOM do? So DOM selects the HTML node and fire some event. अब क्या होता है कि जैसे DOM आपका इवेंट फायर किया विद द हेल्प ऑफ व्हाट? सम इवेंट हैंडलर्स, तो जावास्क्रिप्ट इस इवेंट को क्या करता है? लिसन करता है, सुनता है, और देन इट रिएक्ट टू व्हाट? टू जावास्क्रिप्ट। समथिंग लाइक कि मैंने बोला कि मुझे चाहिए इस बटन पे, व्हेन वी क्लिक ऑन इट, द something which you entered in this input has submitted and set in the what? List. So what is the task? Task is something राइट, यही चाहते हो? सर आवाज कट गई थी बीच में पूरा। सर आवाज म्यूट हो कट गए गई थे सर आप आप। पूरा ही। Now I'm audible. यस सर। या सर ऑडिबल सर। So my concern is कि I want, when I hit the submit button, then the value which is in the input is just pasted in the list and your input is cleared. So what happens when you hit this submit button? First step is what? Step 1. When you click on this submit button, then what? Selector comes in the picture. Selector selects the what? HTML node. पहला काम क्या हो गया? सेलेक्टर क्या कर लिया? इस नोड को पहचान लिया कि किस पे इवेंट फायर हुआ है। तो सेलेक्टर क्या करता है? सेलेक्टर सेलेक्ट्स द HTML node with the help of what? Query selector, get element by ID, get element by class name, get element by what? Tag name, या query selector all. तो when you click on that button, तो सबसे पहले query selector इसको क्या करेगा? इसको select कर लेगा, और जैसे select करेगा एक event fire करेगा. And what is this event? It fires the step 2 में क्या होगा कि DOM fires the event whatever be given to it. The first work is what?
it selects the HTML node, and then it fires the event whatever we given to it. जो भी हम event fire करने को बोलेंगे वो उसको fire करेगा. तो what are these events? I'm going to talk about these events. So events are something, events in JavaScript. I'm searching it. This is your Java point. Yes. So now we have a number of events, JavaScript events, like click, like mouse over, mouse out, mouse down, mouse up, mouse move, something like keyword events, key down, key up, focus, submit, blur, change, right? We have a number of events. So 90% of case, maximum click is fired. So in 90% of case, click up use karte ho. Apart from that, it also submit is also important, and apart from that, this change is also important. What is where is change? कहीं change दिखा था तुम लोगों को? Yes, sir. So this change, this submit, and this click is important, which is rapidly used in maximum of the web applications. Apart from that, ये भी सारे events होते हैं. तो पहला काम क्या होता है DOM का? It selects the HTML node and then fires some events on it. तो यहाँ तक समझ में आ गया ना? What DOM do? Code select करना है. Yeah, so it selects the HTML node and fires some events on it. Whatever we event defined in the code, वही event क्या होगा? Fire होगा. अब जैसे इवेंट फायर होगा, जावास्क्रिप्ट उसको कैच करेगा और उस पे फिर हम क्या करेंगे? उसकी फंक्शनैलिटी लिखेंगे. समझ में आ रहा है? इतना तक थोड़ा समझ में आया? फर्स्ट वर्क इज हिट द क्लिक बटन. सबसे पहले वो सेलेक्टर क्या करेगा? उस नोड को सेलेक्ट करेगा. देन योर डॉम क्या करेगा? एक इवेंट फायर करेगा. वट एवर यू गिवन द इवेंट, वो इवेंट क्या करेगा? वो DOM आपका फायर करेगा. देन जावास्क्रिप्ट कैचेस दिस इवेंट एंड देन परफॉर्म एनी एक्शन जो भी आप फंक्शनैलिटी उसकी लिखे रहोगे. तो लेट्स स्टार्ट. राइट. सो व्हाट आर DOM इवेंट्स? JavaScript listen to events and act based on whatever the user does. If we click, hover, mouse entering over something, or user trying to search anything in search bar, so we can listen these events and react to them using JavaScript. ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है. इतना समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत? Yes, sir. ठीक है. sir. No, sir. Okay, so now I am going to like make something different. So I'm now going to connect what? The selector things and the event firing thing. Right? Okay. ठीक है. ठीक है. HTML मैंने बंद कर दिया है क्या? ओके, ठीक है. Yes. So this is our where we have a script to. अभी तक हमने नहीं बनाया. So I am going to just make another script which is something script 3.js. Right, and index.html I'm going to link with script 3.js. Okay, now our script is what? Connected to our HTML. Okay, give me a second here. आज की क्लास में ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है. Griffin, bro, your voice is not clear. पता नहीं क्यों क्लियर नहीं आ रही, क्योंकि मैंने अभी सिस्टम ऑफ कर दिया है. मोबाइल से कर रहे हैं ना, इसलिए शायद इसलिए. अब सही है ये. Okay, so let's start. So here we have index.html file. I'm just going to remove these
two H1 and H2 tags from here. Okay. Now we have a input and button. I'm just going to give some input, some ID to input. And here the ID of input is, I want to give something like user input. And now I'm just giving some ID to what? Button. So I can give something like enter button. Right. So we have an input button. Okay. So it is nice. So I have just given an ID to what? Input and button. So first we have some input and this button. I want to give some functionality to it. It means I want to interact with these two items. So first, what I have to do? First, अगर आप DOM perspective से सोचोगे, तो you have to select these items. पहला काम क्या होगा? बताओ. इनपुट को करना सर. इनपुट को सेलेक्ट करना. दूसरा काम क्या होगा? इस बटन को सेलेक्ट करना. पहले तो हमें ये सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम फंक्शनैलिटी लिख पाएंगे. तो फर्स्ट वर्क इज व्हाट? अब जिसको समझ में नहीं आएगा वो मेरे से पूछना, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम सीखने जा रहे हैं. सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव वन वेरिएबल where button, and now our button is what? Document dot get element by ID. And here I pass what is your ID. So our ID is something. User input and enter है. Okay. So now I'm just going to take this ID. Okay, nice. Similarly, I'm going to take another variable which is input, and here I'm just going to document dot get element by element by ID. Now I'm passing user input here. So now button have this enter node, the ID which is enter. So button have H1, but button have what? A button node, and input have the input node. Is it clear now? Okay. Yes. Now I also want कि when I hit the submit button, the item is added in this list. The item is added in this list. So what I have to select? So third item I have to select is what? UL. So now I'm giving something like variable UL, and now document. सर डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग गलत है. Okay, sorry. Document dot here we have what? Query selector, and now I'm just passing it what? UL. Nice. So now I selected these three items. First is what? This input. Second is what? This button. And third is what? This whole unordered list. Okay. So our first step is done. So सर एक क्वेश्चन था. yes. सर यहाँ पे आपने क्वेरी सिलेक्टर की जगह पे टैग नेम. भाई कौन हो यार? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है यार. I don't hear you यार. भाई मैसेज में लिख दे, आवाज नहीं आ रही तेरी, मैसेज में लिख दे, जवाब मिल जाएगा. अरे उसका माइक्रोफोन साफ कर फोन का. सर वो पूछ रहा है कि आपने क्वेरी सिलेक्टर ऑल क्यों नहीं लिखा? Because I have to select the UL tag now. सर ये नहीं पूछा सर, ये पूछ रहे हैं यहाँ पे आप टैग नेम भी लिख सकते थे सर. I don't hear you भाई यार. टाइप कर लो भाई. वो बोल रहा है सर टैग नेम भी तो लिख सकते थे. क्वेरी सिलेक्टर की जगह पे. सर आपका माइक म्यूट सर है. आपका माइक. यस. Okay. So I have already said that you can use query selector as well as like get element by tag name, whatever you want to do. But standard practices you can just select with query selector. So our first step is done. I have selected all the items where we have to perform some what? An action. Nice.
Now, what the second step? So second step is what? What? Firing some Event. events from this tag name, or from this HTML node. Okay, that's cool. So now, what I have to do? I have to fire some events on what? This button. इस बटन पे ही तो इवेंट फायर करना है. हम तो यही बटन पे चाहते हैं ना कि जब हम क्लिक करें तो कुछ फायर हो. यही चाहते हैं ना. तो when I click on this button, I want to fire some events. So how can we do that? So I'm just going to select this button. So this is your button. And now, button is what? Also an object. क्योंकि जब get आप एंटर को लिए होंगे तो ये क्या रिटर्न किया होगा? समथिंग लाइक व्हेन आई जस्ट यूजिंग console.log and I'm just passing button from here, and now I'm just going to remove this, and now I'm console.log. Yes, it gives you what? This button. So now you can do what? You can do button dot. If you want to fire any event from any node, then you have to use what? Add event listener. What? Add Event listener. Is it clear? So if you want to fire any event, then you have to use this add event listener. Okay. Now, this is a function which accept what? Which accept a callback function and the event which you want to trigger. So here we have a different event list. We have different event. Yes. So we have JavaScript events. Yeah. So we have this different event. So I want to fire what? This click event. So first argument, I have to pass this click event from here. It means I want to fire this click from this button. So first you selected this button with get element by ID. Then second step, you have fired this event, which is what? A click event. Then after, second, don't confuse. मैं फिर भी मैं इस पे बहुत बार आऊंगा तो इस पे confuse नहीं होना. Second, you have to pass some function. And what is this function? Something like this. Okay. So what is this? This is the first argument for add event listener, and this function is what? A second argument of that function. मतलब पहले में आपने क्या पास किया है? एक इवेंट हैंडलर, और सेकंड में एक होल फंक्शन आपने क्या किया है? पास किया है. ओके. नाउ अब ध्यान से समझना. I want to fire this click event. So first step is you have to fire the click event, and then you have to what? Add some JavaScript. So here this function is what? It can perform some action. तो पहला काम आपने सेलेक्ट किया, सेकंड आपने एक इवेंट लिस्नर लगाया, और इवेंट लिस्नर में जो भी आपको इवेंट फायर करना था वो इवेंट का नेम दिया, एंड अब यहां तक इवेंट फायर हो गया. यहां तक क्या हो गया? इवेंट फायर हो गया. नाउ दिस इज व्हाट? योर जावास्क्रिप्ट. दिस इज व्हाट? योर जावास्क्रिप्ट. तो व्हेन यू क्लिक ऑन बटन, तो दिस फंक्शन इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड. आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? Yes. You have selected this button. When you click something, then this what? Event is fired, and this JavaScript function is called. So what we can do? I want something like मैं कुछ कंसोल ही करा के दिखाता हूँ यहाँ पे. console.log, and I'm just hello button is what? Pressed. देखना. I'm just going to refresh my page, and here it is console. So I'm just going to remove this console and refreshing my page. When I hit the button, yes, hello button is what? Pressed. When I again submit, when I again click, जितनी बार मैं क्लिक करूंगा इतनी बार क्या हो रही है? ये console.log हमारा क्या हो रहा है? प्रिंट हो रहा है. तो व्हाट की क्या हुआ? जब भी आप इस बटन को क्लिक किए, देखो मैं इतना प्यार से समझा रहा हूं ना, इतना डॉम पे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बस आप लोग समझ जाओ, बस इतना मेरा ये है. तो पहला मैंने काम क्या किया है कि मैंने
इस document dot get element से मैंने इस बटन को क्या किया, I add this add event listener, and as a first argument I have to pass what event I want to pass. So I want to pass click, so I have passed click. It has some special meaning. After that, as a second argument, I pass the JavaScript function. So जब भी आपने click को trigger किया, fire some events from the HTML node, तो तीसरे step में क्या होगा, a JavaScript function is called with some actions. So whatever you performed in JavaScript function, it is automatically what? Called. तो यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं सर, कोई नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इज इट क्लियर ना? यस सर। ओके, तो अब हमने क्या किया, एक इवेंट लगा दिया, हमने एक फंक्शन को कॉल कर लिया। अब मुझे क्या करना है कि व्हेन आई हिट द एंटर विद सम इनपुट, तो क्या हो जाए, इस लिस्ट में ऐड हो जाए। व्हाट, हाउ कैन वी अचीव दैट? ओके, सो नाउ वी हैव समथिंग व्हिच इज लाइक, आई वांट कि सबसे पहले मैं क्या करूं कि जब भी मैं क्लिक करूं तो क्या हो जाए, एक नोड क्रिएट हो जाए। और कौन सा नोड क्रिएट हो? एक लिस्ट का नोड। यही तो चाहते हो ना कि व्हेन यू क्लिक ऑन, गिव मी अ सेकंड, okay, so what I have to do, like when I hit the submit button, I want to add something in my list. So what we have to do, we have to create a node for what? A list item. क्या करना पड़ेगा? जब आप हिट करो तो एक लिस्ट आइटम के लिए नोड क्रिएट करना पड़ेगा। और ये कौन क्रिएट करेगा? ये आपका फंक्शन क्रिएट करेगा, क्योंकि आपके डॉम का काम क्या है? इवेंट फायर करना। और जावास्क्रिप्ट का काम क्या है? फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना। तो अब क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट क्या होगा? फंक्शनैलिटी क्रिएट करेगा। तो यू वांट समथिंग कि यू वांट टू क्रिएट अ नोड, सो व्हाट यू हैव टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू use variable list which stores what I want, document dot what I want to create. I want to create a list item, so I use create element and I have to pass what? List here. So create element, what it do, it creates the list node. Whatever you passed here, it creates that node for you. So now when you click on button, this function is called, and this function what it do, it creates the list item. Is it clear ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है? मैं क्या करता हूँ? Yes sir. Yes, sir. If I use something like console.log and here I just console.log list, so now when I'm just going to refresh and hit the submit button, yes, the one list node is created. One list is what? Created. Okay, so now the list is created, but we have to what? Append this list to what? This document.
अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमने लिस्ट तो क्रिएट कर लिया, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट को अपेंड करना पड़ेगा किसके साथ, आपके इस यूएल के साथ। आपको इसी यूएल में तो लिस्ट चाहिए ना, तो हाउ कैन यू डू दैट, यू हैव टू सिंपली पास लिस्ट। देखो क्रिएट एलिमेंट से क्या होता है, एलिमेंट क्रिएट होता है, कोई भी नोड क्रिएट होता है। नाउ जब एलिमेंट क्रिएट हो गया, नाउ यू हैव टू अपेंड दिस लिस्ट। सो व्हाट यू हैव टू डू, दिस लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, व्हाट, अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड क्या करेगा, आपके लिस्ट की जो भी लिस्ट आपने नोड क्रिएट किया है उसको क्या करेगा, जिसके साथ आपको अपेंड करना है, मतलब जिसके साथ आपको उसको ऐड करना है, उसके साथ क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो व्हाट समथिंग, इफ आई पास लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड एंड हियर आई जस्ट पास समथिंग लाइक डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट node. Create text node means whatever you want to add in your node. देखो append list child क्या किया कि जो भी, देखो अभी लिस्ट आइटम तुम्हारा क्या है, ये तो नोड ही क्रिएट हुआ है ना, अभी जो आप इसके अंदर टाइप करोगे वो तो क्रिएट नहीं हुआ, ये सिर्फ एक लिस्ट आइटम बना के दे दिया। तो अब क्या कर रहे हो आप कि लिस्ट को अपेंड कर रहे हो, लिस्ट को क्या कर रहे हो, अपेंड कर रहे हो, और आप इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखोगे उसको क्या कर रहे हो, उस लिस्ट के साथ अपेंड कर रहे हो। व्हाट यू हैव डू, यू हैव ओनली वट एवर यू राइट इन द लिस्ट, यू अपेंड दिस टेक्स्ट टू व्हाट, दिस list. So I just pass something like testing. I write something like what, testing. Now I am just going and write ul dot what append child, and here I just going to pass what, list. Now when I just refresh this page, and now I'm just going to hit the submit button. When I hit the button, testing is added, testing is again added, testing is again added, testing is again added, right? So अब कोड समझ में आ रहा है ना, पहला आपने क्या किया है, अभी भी आपने अचीव नहीं करा है जो आपको अचीव करना है, बट आपने इतना कर लिया कि सबसे पहले आपने एक लिस्ट को क्रिएट कर लिया। देन आप अपने लिस्ट में क्या करा, जो भी आप लिख रहे हो, जो भी इसके अंदर का टेक्स्ट है, उसको क्या कर रहे हो, लिस्ट के साथ अपेंड कर रहे हो। अब लिस्ट के साथ तो वो अपेंड हो गया, बट अब वो लिस्ट भी तो किसी के साथ अपेंड है, तो वो लिस्ट का पेरेंट आइटम कौन है, यूएल है। तो यू अपेंड द लिस्ट विथ व्हाट, दिस यूएल। सो यू हैव रिटन लाइक दिस यूएल डॉट अपेंड चाइल्ड एंड देन पासेस दिस लिस्ट। अभी तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। नाइस सर एक डाउट था, यस। ये जो हम लोग अभी यहाँ पे लिख रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, तो उसके जगह पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डायरेक्टली अगर हम लोग ये इनपुट जो है वो दे दे तो? हाँ, इनपुट दोगे तो वो इंटायरली चेंज कर देगा ना पूरे कंटेंट को, बट आई वांट कि जो भी नोड मैंने क्रिएट किया है ना, जो भी मैंने लिस्ट क्रिएट किया है, जो भी एलिमेंट, उसके अंदर मैं इंसर्ट कराना चाहता हूँ इस एलिमेंट को। मेरी बात को समझ पा रहे हो? नहीं सर, नहीं समझा, प्लीज एक बार। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आई वांट कि ये जो लिस्ट हो, अब इस लिस्ट में आपको नॉर्मली जो लिस्ट मिला होगा यहाँ से, इस लाइन ऑफ कोड से कैसा मिला होगा, समथिंग लाइक दिस, है ना, यही मिला होगा ना। अब इसके अंदर आपने कुछ टाइप किया है, समथिंग लाइक आप यहाँ कुछ टाइप करना चाहते हो, तो ये भी तो मुझे अपेंड करना पड़ेगा ना। तो ये किसके लिए, ये जो आइटम है, ये जो VDCVD है, ये किसका है, ये चिल्ड्रन है ना इस लिस्ट के लिए। इस लिस्ट के लिए क्या है, ये चिल्ड्रन है। Append this item to what, this list. So I use list dot append child, and then I have to create a text node. यहाँ element create हो रहा है, it creates your element, but it creates what, a text node which is inside your HTML element. It creates a text node, which is, text node means this item, which is inside your what, a node. So I use create text node. So now your ul dot append child, आपने लिस्ट को अपेंड कर दिया। यहां तक आप जब भी हिट करोगे तो क्या होगा, एक सबमिट बटन पे टेस्टिंग आएगा। बट आई डोंट वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, आई वांट समथिंग डिफरेंट। व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूं
क्योंकि जब मैं हिट करूं तो ये टेस्टिंग ना आए, जो भी मैं इसके अंदर कंटेंट डालूं वो आए, ये हमें अचीव करना है ना। तो व्हाट वी हैव टू डू, अब देखना है अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए। मैंने यहाँ तो एक स्टैटिक कंटेंट डाल दिया टेस्टिंग, बट आई हैव टू, मुझे तो ये नहीं देना है ना, मुझे तो जो इनपुट में डालना है वो डालना है। तो हाउ कैन वी अचीव दैट? ओके, सो लेट्स सी, we have this input, we have this what, a input which selects what, a user input node. Is it okay now? Is it okay now? Yes, sir. So now this input have, if you just use console.log and now input, so when I just refresh the page, it have something which it returns as a HTML, but it have their own property, which is what, a value. So if you write something like this, input.value, then I'm just refreshing my page, and if I write something and hit the enter button, okay, what is wrong with it? Okay, user input get element by ID, तो मैंने ID से ही पकड़ा है, तो I can pass console.log. What is this one? Create text node. Okay, sorry, because your create text node is what here in empty, so I'm just passing something here. Okay, now I'm just write something, and when hit the button, okay, it don't gives you an access. So I'm just giving this input dot value and just pass this input dot value inside what, inside this text node. So I only have to pass input dot value. Okay, I'm just going to now I'm writing something and hit the enter button. Yes, now it is what, it is added on your to-do list. So when I write others and hit the submit button, then it added in your list. How can it possible? So I have selected this node. If I want to select the value corresponding to that node, then we have to or input dot value. So whatever the input dot value which is selected from this node, I only pass this value to what, create text node. So whatever inside this input, it is captured in what, input dot value, and I only have to pass this input dot value in what, for when creating the text node. So is it clear? So when you write and hit the submit button, it is added to what, your list. तो इसमें कोई दिक्कत है, इस कोड में कोई दिक्कत हो तो पूछो। नो सर। सर ये जो यूएल हमने एलआई को हमने यूएल के अंदर अपेंड किया है, अगर हमने यूएल को अपेंड ना करे, मतलब यूएल पे ना करे, तो ये कहाँ पे रेंडर होगा? फिर से पूछना। सर अभी जिस लाइन पे आप हो ना, वो लाइन अगर ना हो तो ये एलआई कहाँ पे रेंडर होगा? हमने जो इनपुट वैल्यू लगाया है वो। तो भाई ये बाय डिफॉल्ट तुम्हें तो कोई नोट तो देना पड़ेगा ना। आप किस लाइन की बात कर रहे हो? लास्ट लाइन की बात कर रहा हूँ। सर यूएल अपेंड की बात कर रहे हैं। तो मान लो कि जब मैं ये लाइन हटा दूंगा तो ये यूएल के साथ अपेंड ही नहीं होगा ना। देखो ये कहाँ अपेंड होता है, क्योंकि जब आपने लिस्ट का नोड क्रिएट कर लिया, आपने लिस्ट का पहले लाइन में क्या कर लिया, यू हैव क्रिएटेड द लिस्ट node, right? And in second line, what you have do, you have created the what, text node for what, list. अब आपने यहाँ तक काम कर लिया, आपने लिस्ट को क्रिएट भी कर लिया, आपने उसके लिए टेक्स्ट भी क्रिएट कर लिया, बट आप अब अपेंड नहीं करते हो. आई एम जस्ट गोइंग टू सेव इट एंड नाउ हिट द एंटर बटन and now I'm just typing something in here. When I hit the button, it doesn't do anything. But every time, like जब भी आप ये लिस्ट को रेंडर करोगे तो ये लिस्ट के अंदर अपेंड तो हो रहा है, नोड भी क्रिएट हो रहा होगा, वैल्यू भी जा रही होगी, बट आपने किसी के साथ अपेंड ही नहीं किया, इसलिए ये आपको शो नहीं कर रहा है.
तो आपको अपेंड करने के लिए इफ यू वांट कि नहीं मैं यहाँ टाइप करूं और ये चीजें जाके यहाँ पे रिफ्लेक्ट करें, तो आपके लिए मान लो कि समथिंग लाइक कोई दूसरा यूएल है और आप चाहते हो कि उसके अंदर जाके लिस्ट अपेंड हो, as if you want something like this is your index.html file and this is your another UL, this is your another UL, and here you have only one li, right? And if you give something like UL class name, and this class name is what so I'm giving class, so this class is something like ID, I am just giving ID, so this is ID, and here in ID I'm just passing what, second UL. If you want to append with, when you hit the enter button, you want to append the list item with this UL, what you can do, you have to simply go in your script file, and now you can just select variable UL2 is equals to what, document dot what, get element by ID, and now you can pass what in UL here. सर Yes, सर आई एम गनप्रिया, मैं लीव कर सकती हूँ लेक्चर बिकॉज बैटरी नहीं है और मैं बाहर हूँ थोड़ा. okay, you can. ओके सर, थैंक यू. Okay. This is UL2, and if you want to append, what you can do, you have to simply what, replace UL with UL2. Now, when you refresh the page, and here this is your index.html, and here I have two lists. And now when you write something here, it is appended to what? This UL. So now when you write Adarsh Pandey, then it is submitted and it is appended to second UL. तो समझ रहे हो ना, आप जब लिस्ट को क्रिएट कर रहे हो, नोड क्रिएट कर रहे हो, टेक्स्ट बना रहे हो, तो यू हैव टू अपेंड दिस लिस्ट आइटम विथ व्हाट, एनी नोड. नहीं तो कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ उसको रेंडर करना है. सर यहाँ पर कहने का मतलब ये, यहाँ पर पेरेंट जो हमारा पेरेंट है एलिमेंट, उसको इसमें ऐड करना रहेगा, तभी तो अपेंड रहेगा जो भी हम इसमें एंटर करेंगे. सॉरी मेरा कनेक्शन चला गया था. यस, हाँ हिमांशी, कोई क्वेश्चन क्या तुम्हारा? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं था, मैं बोल रही थी यहाँ पर जैसे बोला कि हमने यूएल अपेंड क्यों किया, क्योंकि सर वो एक पेरेंट एलिमेंट है तो वो तो हमें अपेंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐड तो उसी में करना है, एलआईसी के अंदर आता है ना. करेक्ट. डू व्हाटएवर यू वांट, लाइक यस, अगर आप यहाँ मान लो कि आपने h1 ही नोड क्रिएट किया, समथिंग लाइक यू हैव क्रिएटेड h1 हियर, h1 हियर, राइट, एंड नाउ यू कैन वांट कि ये जो h1 है ये h1 रहे और h1 अपेंड हो जाए, तो h1 अपेंड हो गया, इनपुट वैल्यू मिल गई उसको. अब नाउ यू कैन व्हाट यू कैन डू, समथिंग लाइक मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे h3 बोल, and this typography is appended. सर बीच में आवाज कट गई थी आपकी पूरा. Okay, I'm suppose I'm just not creating the li element, I'm creating the h1 element, right, and store the h1 node on this typography. Now I have to append the typography with what, their value, and now I can pass something like I can pass here, I want to I want to append with this UL2. Now h1 is appended, so what it can do, like yes, I am writing others and hit the enter. Okay, list is not defined, there is some error. What is the error, कोई बताएगा मुझे? Yes, कोई error बताएगा मुझे ढूंढ के? So h1 defined ही नहीं है. नहीं, मैंने h1 लेकिन h1 ऊपर भी तो वेरिएबल में डिफाइन होता है. लास्ट लाइन में li डिफाइन नहीं है शायद. right,
एक्चुअली आई हैव टू पास व्हाट दिस टाइपोग्राफी है ना, तभी तो ये पकड़ेगा ना। अब देखना, अब मैं कुछ टाइप करता हूँ तो ये H1 बड़े से टैग में लेगा। यस, ले रहा है ना, बिकॉज आपने जो नोड क्रिएट किया है वो क्या किया है, H1 किया है। इज इट क्लियर ना? कोई प्रॉब्लम किसी को? यस सर, क्लियर। मैं यहाँ LI कर देता हूँ। यस बताइए। सर एक कंफ्यूजन, आपने ऊपर वेरिएबल यूएल क्रिएट किया है, उसमें फर्स्ट आपने किया डॉट क्वेरी सिलेक्ट, तो यूएल टू में आपने गेट एलिमेंट आईडी के हिसाब से मतलब क्या किया? ये कौन है, फिर से पूछा। अफजल। यस अफजल बताओ। तो आपके पास वेरिएबल यूएल है, वहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर यूज किया है, बट नीचे जो गेट एलिमेंट आईडी यूज किया है वो ये इस वजह से क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? वही नीचे हम क्वेरी सिलेक्ट यूज नहीं कर सकते। मैं कितनी बार बताऊं, मैंने क्या क्या बता दिया। अभी आप कहाँ हो? यहाँ मैं आईडी के बिहाफ पे सेलेक्ट करा रहा हूँ, वहां क्वेरी सेलेक्टर के बिहाफ पे करा रहा हूँ। क्वेरी सेलेक्टर मींस की जो फर्स्ट उसको यूएल मिलेगा वो उसको गेट करके चला आएगा, बट वी हैव अ मल्टीपल यूएल ना, तो देन वी हैव टू। समझ गया सर मैं। ओके चलो ठीक है। या क्वेश्चन था मेरा Yes, सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि वो जो हम लोग अपेंड किया है नीचे, मतलब अगर मुझे उसको सबसे टॉप में ऐड करना, जो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स में डाल रहा हूँ टॉप में आए, मतलब टॉप में उसके ऊपर टॉप में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? तो वो तुम क्रिएट कर लो, वो नोट क्रिएट कर लो, जहां पे भी डालना है उसको यहाँ पहले गेट कर लाओ और उसके अंदर अपेंड कर दो अपने आइटम को। बट हम अपेंड कर रहे तो नीचे अपेंड हो रहा है ना सर। जैसे मैंने यूएल के अंदर एलआई डाला, ठीक है, तो एलआई क्या हो रहा है मेरा नीचे, मतलब जब भी मैं उसमें टेक्स्ट बॉक्स में संतोष डाल के एंटर करूंगा तो मेरा एलआई नीचे अपेंड हो रहा है, मतलब नीचे से चिपक रहा है। मुझे ऊपर रखना है, मतलब जहाँ पे आपका ऊपर वाला सबसे पहला वाला एलआई है ना, उसके ऊपर बनना चाहिए मेरा। हाँ तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप एलआई क्रिएट कर रहे हो ना और नोट क्रिएट कर रहे हो, अपेंड चाइल्ड कर रहे हो, तो उसके बाद आपको इसके साथ एक सेलेक्ट करने का भी आइटम आता है कि हाउ कैन यू पुट, क्या होता है, मैं मिस कर रहा हूँ, कोई नेम होता है कुछ अपेंड के साथ प्रीपेंड नहीं लगा, प्रीपेंड ऐसा कुछ फंक्शन जो कि ऊपर चिपका है अपने को, ऐसा भी होता है? पढ़े हो क्या डिपेंड? शायद मैंने किया हुआ। कि ऐसे हवा में बोल रहे हो? नहीं किया हुआ है, शायद मैंने किया है। होएगा कीजिए। आइटम इन द लिस्ट, यार मैंने आइटम इन द लिस्ट इंसर्ट बिफोर, यस कुछ ऐसा होता है, इंसर्ट बिफोर होता है जो कि आप यूज कर सकते हो अपने एलिमेंट डॉट फर्स्ट आइटम। अच्छा तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेट सारे आइटम्स को गेट करना पड़ेगा और एज अ सेकंड आर्गुमेंट आपको पास करनी पड़ेगी एलिमेंट डॉट फर्स्ट चाइल्ड। तो एलिमेंट क्या होगा कि जब आप सेलेक्ट कर रहे होगे ना, तो वहां पे आप आईडी के भी यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना, आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेरी सेलेक्टर ऑल यूज करनी पड़ेगी। तो क्वेरी सेलेक्टर ऑल से क्या मिलेगा, आपको एरे मिल जाएगा। और नाउ जब आपको एरे मिल गया तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपने एलआई क्रिएट किया और देन इंस्टेंट बिफोर, और फिर जो आइटम आप क्रिएट कर रहे हो, जो भी आपने क्रिएट किया होगा नोड, वो नोड एंड नोड के बाद एलिमेंट जो भी एलआई डॉट फर्स्ट आइटम, अगर एलआई पे आपने नोड क्रिएट किया है तो एलआई डॉट फर्स्ट आइटम आप पास कर दोगे एज अ सेकंड आर्गुमेंट। इट वर्क्स, ट्राई करना। यू कैन। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ तक तो समझ में आया। तो आज कुछ इंटरेस्टिंग मिला तुम्हें, तुम लोगों को? यस मतलब एक सर कह सकते हैं एक पाथ मिल गया हमें अपना खुद का जावास्क्रिप्ट लिखने का। जैसे कि एक फेसबुक आईडी जैसे बनाई थी, तो वहां पर हम यूजर नेम से कोई यूजर अपना नेम डालेगा तो वो हमारे उसमें कैसे मतलब आता जाएगा, तो ये समझ में आ गया। यस सो नाउ आप लोग अपना एक फेसबुक एप्लीकेशन बना सकते हो जहां आप एक सिंपल डिजाइन कर सकते हो, लॉगिन बटन, सॉरी लॉगिन इनपुट है ना, पासवर्ड इनपुट, राइट। अब देखो कुछ इमेजिन करो कैसे बनाना है। आपने एक यूजर ने आप लॉगिन पासवर्ड है ना, एक बटन बना दिया और आप उसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या कर सकते हो, उसको सेलेक्ट कर सकते हो
उस पे क्लिक की जगह इनपुट पे क्या फायर करोगे, चेंज इवेंट फायर करोगे, है ना। और बटन पे क्या फायर करोगे, क्लिक फायर करोगे। तो आप मान लो कि आपने क्लिक ही फायर किया, आपने क्लिक ही फायर किया, तो आपके पास अब 2 इनपुट होगा, इनपुट 1 इनपुट 2, या यूजर इनपुट एंड पासवर्ड इनपुट, राइट। तो जब आप क्लिक पास करोगे तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, लिस्ट में अपेंड कर दोगे। क्या आप यहाँ अपेंड करना सीख रहे हो, तो यहाँ आपको अपेंड नहीं करना है, आपको क्या करना है, चेक करना है। तो जो फंक्शनैलिटी हमने लगाया था वो फंक्शनैलिटी भी हम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम दो, अभी थोड़ा और समझ में आ जाएगा, अभी है 15-20 मिनट टाइम। ओके, तो अभी कुछ और भी करेंगे जिससे आप लोग को बहुत कुछ क्लियर हो जाए। पूछनी है सर, यहाँ पे जो इनपुट के आगे डॉट वैल्यू दिया है, वैल्यू उन्होंने वहां पे HTML में तो उसके आगे ऐड किया नहीं था। नहीं, ये वैल्यू अपेंड हो जाता है, डायरेक्टली वैल्यू अपेंड हो जाता है HTML के साथ। ये डॉम की खूबसूरती है, इट अपेंड्स समथिंग, ये ऑब्जेक्ट बनाता है और चीजें खुद अपेंड कर देता है उसके साथ। व्हेन यू पुट समथिंग इनसाइड इट, देन द इनपुट वैल्यू इज समथिंग व्हिच इज दिस। क्लियर है भाई। अब मैं जावास्क्रिप्ट की डॉम के अंदर जाके तो नहीं बताऊंगा ना कि, बट ये समझ लो कि जब कुछ भी राइट करते हैं HTML में, जब डॉम क्रिएट होता है तो दिस वैल्यू इज अपेंडेड टू दिस इनपुट आइटम, दिस इनपुट एलिमेंट। व्हेन यू वांट टू एक्सेस इनपुट डॉट वैल्यू, यू कैन इजीली गेट, जब आप उसको किसी भी सेलेक्ट करते हो। ओके, अब नाउ मैं कुछ और करने जा रहा हूँ इसमें। आई वांट समथिंग डिफरेंट, एंड व्हाट इज डिफरेंट, देखो यहाँ से बहुत कुछ समझ में आएगा और कैसे चीजों को, तो 15-20 मिनट और ध्यान से समझना। ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव दिस UL एंड हियर आई वांट दिस UL। ओके, चलो, तो लेट्स सी। आई वांट समथिंग लाइक कि व्हेन वी टाइप समथिंग एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग क्लिक इवेंट हैंडलर, मतलब जब हम क्लिक करते हैं तो ये परफॉर्म करे। बहुत सारे वेबसाइट पे आप जाते होगे और जब आप टाइप करते हो, अगर एंटर बटन दबा देते होगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, सबमिट कर लेता है ना ऐसा। अब मैं कुछ ऐसा इवेंट इस पे ट्रिगर करने जा रहा हूँ जिससे थोड़ा सा डायनामिक होगा चीजें और थोड़ा सा और क्लियर होगा। तो आई वांट टू राइट समथिंग एंड जस्ट वांट टू हिट द एंटर बटन ऑन द, when I hit the enter button, the item which is just going and just just inserted in the list. Okay, how can we do that? So now I am not, क्योंकि मैं बटन को तो क्लिक कर नहीं रहा हूँ तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। I am just going to write something like input. I am going to select this word input, right? And now on this input I am going to what? Trigger some event. So how can we do that? This is event trigger, event LISTNER. Okay, this is event listener. Now for key pressing stuffs, if I go and here we have something like key press. Where is my key press? Key press. Okay, I'm just going to search key press event in JS. Okay, so ठीक है, no, this is not okay. So yes, so I have something like this syntax, which is what? A key press, right? So I can use a key press instead of using what? Click event handler. So here I can pass a key press event with what? This input. Now the event is fired and now I'm just going to call a function. So here it is, this is my function, and here when I hit the enter button, when I press the key, I have to pass what? Event. This event is automatically attached when you press the what? Enter button. When you hit the enter button, this E is what? A event. It is automatically attached to what? This function. तो अगर आप यहाँ event
इसको जनरली ये इवेंट मिलता ही है। जब भी आप कोई इवेंट हैंडलर ट्रिगर करोगे, क्लिक करोगे, प्रेस करोगे, तो मैंने क्या बोला है कि आपने इवेंट फायर किया है, तो दिस इवेंट इज व्हाट अटैच टू दैट फंक्शन। जब भी आपने कोई इवेंट ट्रिगर किया, ये इवेंट क्या हो गया, आपके जावास्क्रिप्ट फंक्शन के साथ अटैच्ड हो गया। नाउ यू कैन डू समथिंग लाइक, if I want, I'm giving one condition. If I'm giving something like, if input dot value dot length is what greater than 0, it means कि when you write something, I want कि जब मैं इस पे कुछ डालूं तभी क्या हो, एंटर करे तो ही जाके आइटम ऐड हो। अब अगर इसके अंदर मैंने कुछ डाला ही नहीं और मैं एंटर बटन दबा रहा हूं, तो आपका फंक्शन क्या हो, ट्रिगर ना हो। तो आई एम गिविंग कि इनपुट डॉट वैल्यू डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 0, तभी आपका एंटर बटन के साथ ये फंक्शन एसोसिएटेड हो। एंड आई एम गिविंग सेकेंड कंडीशन, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज कि वट एवर यू पास दिस इवेंट डॉट की कोड, दिस इज व्हाट अ की कोड। ओके, व्हाट इज की कोड, आई एम जस्ट गोइंग टू going on key code. What is this? Yes, yeah. Here, this is your key code. No. I have here something like keycode.io. Just searching here keycode.io. Okay, so basically what is key code? Yeah, where is key code? Event key code, developer Mozilla, Topple free code camp. Yes, this is your key.js. Yeah, I'm searching about this. And what is this? I'm just, yeah. So when you go on this key code, like when you just enter, use enter button, तो आपने जो enter की पास किया उसका की कोड क्या है, 13 है। What is the key code? What is the key code? This is the 13. When you use space, key code is what, 32. When you hit the enter button, then key code is what, 13. So now I can write something like event.keycode is what is equals to what, 13. It means what, आप की तो आप कोई भी प्रेस कर सकते हो, तो मैंने ये डेप्रिसिएटेड हो गया, तो डोंट वरी अबाउट दिस कि बट जब आप की कोड 13 होगा, मतलब जब आप एंटर बटन दबाओगे तभी तो की कोड 13 होगा, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा, इट नॉट वर्क। सो नाउ आई एम गिविंग वेरिएबल and now I am just going to appending li. So firstly I have to create what, element. So now I can write something like document dot create element, and here I have to pass what, li, right? अब क्या हो गया कि जब इनपुट की लेंथ 0 से बड़ी होगी और आप की प्रेस कर रहे हो और की कोड की वैल्यू 13 होगी, तो एक लिस्ट आइटम व्हाट इट इज क्रिएटेड। नाउ you have to append this list item. So what you can do, list append child, right? And now you can pass something like document dot create text node, and here you have to pass what, input dot value. Okay, it is fine. And now you can just append ul dot append child, and now you can pass what, list. Okay, just save it. And now I'm going to refresh my page, and here I'm just passing, I have to watch movie. When I hit the enter button, yes, it is now added in your list, but when it is empty, it not acts. Like when I hit the button, it not works. Why it is so? Because you have given such condition like input dot value dot length is 0. Okay, is it clear now?
ओके सो हियर अभी यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को, कोई बताना? नो सर। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, है ना? हाँ सर। यस ओके नाउ आई एम गिविंग समथिंग लाइक कि जब भी मैं एंटर कर दूं इस पे कुछ भी, तो लाइक मैंने कुछ टाइप किया और हिट किया एंटर, ये ऐड हो गया, समथिंग ऐड हो गया, है ना? बट आई वांट समथिंग लाइक कि जब भी एंटर हो जाए, ऐड हो जाए, तो ये आइटम क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। तो आई कैन सिंपली डू व्हाट, यहां भी और यहां भी, इनपुट डॉट वैल्यू इज नाउ व्हाट, एम्प्टी स्ट्रिंग। मैंने क्या किया, एम्प्टी स्ट्रिंग इसको सेट कर दिया। यहाँ भी सेम काम करेंगे, इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू व्हाट, एम्प्टी स्ट्रिंग। नाउ व्हेन यू ऐड समथिंग हियर, लाइक व्हेन यू राइट समथिंग और व्हेन यू हिट द एंटर बटन, अब क्या हो गया तुम्हारा इनपुट बेस व्हाट, इट इज क्लियर्ड फ्रॉम योर स्क्रीन। इट इज ओके? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? सर जैसे कि एक फंक्शन भी मतलब जैसे कि एक बॉक्स होता है, उसमें हम मैक्सिमम वर्ड्स लिख सकते हैं, इसके लिए क्या यूज करते हैं? जैसे यहाँ पर मैक्सिमम वर्ड्स मैं नहीं समझा सर। जैसे कि एक फॉर्म फिल करते हैं हम, तो वहां पर कुछ अबाउट मी में कैरेक्टर लेंथ, मतलब कैरेक्टर लेंथ ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लिख सकते, तो इस फंक्शन के लिए क्या यूज कर सकते हैं? स्ट्रिंग का काउंट ले लो ना, स्ट्रिंग का काउंट देख लो कि कितने स्ट्रिंग्स तुम्हारे अंदर आ रहे हैं, उससे ज्यादा आप नहीं एक्सेप्ट करो। आप कंडीशन डाल दो कि योर स्ट्रिंग डॉट, स्ट्रिंग को पहले एरे में चेंज करो, फिर डॉट लेंथ लगाओ। अगर इस लेंथ में ज्यादा है तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके साथ लेंथ की प्रॉपर्टी तो लगा सकते हो ना, एरे डॉट लेंथ। तो आप जब स्ट्रिंग को लेंथ एरे में कन्वर्ट करोगे तो इट इज समथिंग लाइक कि वो कैरेक्टर को काउंट कर पाएगा और फिर वो लेंथ में बता देगा कि मेरे को 20 कैरेक्टर ही चाहिए। तो आई कैन राइट लाइक स्ट्रिंग डॉट टू एरे डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 20, तो मेरे को ये काम नहीं करने देना है, एक कंडीशन डाल देंगे, राइट? यस सर। नाइस। ओके सो नाउ अब हमने क्या किया, हमने क्लिक के लिए भी एक फंक्शन कॉल किया है, हियर इट इज योर फंक्शन, एंड की प्रेस के लिए भी हमने एक फंक्शन रेडी कर दिया है। समझ में आ रहा है? अच्छा है, अच्छा है। तो अब हमारे साथ हमें समझ में आ गया कि मैं क्या कर सकता हूं। पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हमने फर्स्ट स्टेप में किया है। दूसरा कुछ इवेंट फायर करना पड़ेगा, फिर वो इवेंट देना पड़ेगा कौन सा इवेंट फायर कर रहे हैं, एंड देन वी हैव टू एसोसिएट व्हाट, द जावास्क्रिप्ट कोड with that event, right? It is okay. Now I have some question. अब इसको थोड़ा हम ऑप्टिमाइज तो बना सकते हैं। What the optimization means कि there are lot of codes which are repeated here. Like I have, मैं यहाँ भी अपेंड कर रहा हूँ, मैं इस फंक्शन में भी अपेंड कर रहा हूँ, मैं यहाँ भी यूएल के साथ अपेंड कर रहा हूँ, यहाँ भी यूएल के साथ अपेंड कर रहा हूँ। तो व्हाट योर फंक्शन डू, फंक्शन का बेनिफिट क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ कोड को हम क्या करते हैं, बता देते हैं। When there are multiple line of code which is repeated again and again, then we can make a function, right? So for what? कि ये आपका बार बार रिपीटेड कोड नहीं, तो हाउ कैन यू डू दैट? अब ये बताओ तुम लोग ये टास्क में करके लाओगे या मैं बताऊं अभी? सर हम टास्क में करके टास्क में करेंगे सर। ठीक है, तो टास्क समझ में आएगा नहीं कितना कर सकते हैं। यस, सो टास्क इज दैट you have to optimize this code and try to handle the repeated code with what, with a function। मान लो कि आपको जब कभी भी लाइक वेरिएबल सम इज इक्वल्स टू 2+3 करना होता था, है ना? तो आप सम को कॉल करते थे। मान लीजिए आपको सम 2 करना है, तो आप क्या करते थे, फिर से 3+4 समथिंग करोगे। तो जब ये रिपीटेड लाइन ऑफ कोड है, काम तो सब सेम ही कर रहा है, तो सिमिलर लाइक यहाँ भी काम तो सेम ही हो रहा है ना, ओनली वॉट, काम सेम है बट हमारा। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आई वॉन्ट समथिंग, कि हम एक फंक्शन बनाएं और उस फंक्शन को क्या करें कि हम उस फंक्शन की डेफिनेशन लिख दें और उस फंक्शन को हम कॉल कर लें। अब ये ट्राई करना है कि हाउ कैन यू डील विद दैट।
कि ये रिपीटेड लाइन ऑफ कोड चला जाए और एक ये नॉर्मल फंक्शन से हैंडल हो जाए. आई नो इट इज लिटिल बिट चैलेंजिंग, सो डोंट वरी, ट्राई करना, थोड़ा दिमाग लगाना. नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में, अगर नहीं भी होता है, आई विल डिस्कस कि कैसे करना है. ठीक है, क्लियर है? यस सर. ओके, तो अभी तक हमें डॉम समझ में आ गया है और यही काम हम बेसिकली डॉम के साथ करते हैं. तो लाइक ये जो जावास्क्रिप्ट को HTML एंड CSS, इट इंटरेक्ट्स विथ योर HTML एंड CSS. तो अब तो यहाँ तक हो गया है. तो सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल जस्ट स्टार्ट आवर एडवांस जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट्स. सो ऑल द बेसिक जावास्क्रिप्ट्स आर नाउ कंप्लीटेड और आई थिंक कि सबको समझ में आ गया है, पिक्चर सब क्लियर हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे. सो फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट एडवांस जावास्क्रिप्ट सेक्शन. सो लेट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक्साइटेड रहना. तो ये पढ़ के आना, कंप्लीट करके आना जो मैंने अभी टास्क दिया है. शेयर दिस टास्क इन योर ग्रुप and then we will start our advanced JavaScript. Or after the completion of advanced JavaScript, we have a lot of topics like npm scripts, what are node package managers, what are GitHub, GitLab, Bitbucket, all the version control tools, like आपके कोड को कैसे आप क्लाउड पे रख सकते हो, एक दूसरे को कैसे एक्सेस दे सकते हो. अभी जैसे आप करते हो ना, एक दूसरे को कोड भेजते हो, बट स्टैंडर्ड डेवलपर्स कभी भी ये काम नहीं करते, वो कोड नहीं भेजते हैं. They use something like GitHub, Bitbucket, GitLab, many version control tools are there. So हम वो सब सीखेंगे एज अ फुल स्टैक डेवलपर. जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो सब धीरे धीरे हमारी कंप्लीट होगी, डोंट वरी. ठीक है गाइस, तो लेट्स यार अटेंडेंस का झंझट है. ओके, नाउ स्टार्ट योर अटेंडेंस. यस, सो प्रतीक देशमुख. सर प्रतीक देशमुख नहीं सर. सॉरी प्रतीक मैं बोलूंगा यार, मैं आगे नहीं बोलूंगा. प्रेजेंट सर. वैसे टाइटल क्या है तुम्हारा? सर दास. नहीं, दास के आगे भी है. सर कानून है. कानू को. ओके, कोलकाता से हो तुम? नहीं सर, ओडिशा. अच्छा. यस, भावेश. प्रेजेंट सर. अमन कुमार सिंह. यस सर. समझ आ रहा है अमन? यस सर. विनय प्रताप सिंह. यस सर. सागर मधोक. यस सर, प्रेजेंट सर. ओके, वराज संतोष. यस सर. प्रेजेंट सर. कोमल तिवारी. प्रेजेंट सर. कुमार जी. यस सर, प्रेजेंट सर. सर कल भी प्रेजेंट है, थोड़ा कुछ काम आ गया सर. एक्चुअली ऑन द वे थे सर, इसलिए नेटवर्क नहीं कर रहा था. चंदन कुमार. यस सर. हेलो. हिमांशी दर्शन. प्रेजेंट सर. दुपात पढ़ना. वावना. फूलमाला विश्वास. साक्षी देशमुख. जयकिशन पांडे. अफजक बरसा. यस सर, प्रेजेंट. प्रकाश दास. यस सर. वैष्णवी रावल. आयुष शाह. सुजॉय. यस सर. रामधारी रविदास. गौरव सिंह राजपूत. सौरभ सिंह राजपूत. औसफ अनवर. प्रेजेंट सर. आशीष रॉय. यस सर. केशव. यस सर. विजयराज सिंह. यस सर. गनरिया.
आशुतोष सिंह, यस पूछा था ना वो बाहर जा रही है, लॉग आउट किया था। शांतनु रस्तोगी, Yes, sir, I am present. और बंदेश हिरामत, प्रेजेंट सर। मोहम्मद सालिद, संतोष तिवारी, प्रेजेंट सर। राहुल गेजवल, Yes, sir. Present, sir. आशुतोष गुप्ता, प्रेजेंट सर। निखिल रेधाकर, प्रेजेंट सर। दिनेश कुमार, निखिल रेधाकर, ओके, दिनेश कुमार सैनी, विद्या सुंदरकर, Present, sir. अथांग, सर प्रेजेंट। कुणाल सिंह राजपूत, Present, sir. निमीश शर्मा, यस सर प्रेजेंट सर। सोनम चौधरी, सत्यजीत पांडा, विपिन कुमार, प्रेजेंट सर। रंजीत रॉय चौधरी, Present, sir. प्रकाश बोटे, प्रीतम जाना, गोविंद राजपूत, Sir, I can leave, right? Yeah. Thank you, sir. आशुतोष गुप्ता, प्रेजेंट सर। ठीक है, ओके, कुमार जीत, सो सर हेलो। यस, हाँ सर, मेरा 2 बार एड्रेस लेते हो क्या? नहीं भाई, पहले ओके। एक ही बार लेता हूँ। विनय प्रताप सिंह, अच्छा, नहीं यार, विनय प्रताप तुम एक ही बार एडेड हो यार, ठीक है। सो ठीक है गाइस, आप लोग एक बार प्रैक्टिस करना घर पे, वीक है, एक बार फंक्शन जो भी पढ़े हैं अभी तक वो प्रैक्टिस करना है, और क्योंकि फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी हैव सम एडवांस टॉपिक्स टू कवर, तो प्रोबेबली तो अभी तक जितना पढ़े हैं वो एक बार प्रैक्टिस करना, खुद से ट्राई करना, एंड अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो वो एक बार हम डिस्कस कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मैंने टास्क दिया है कि वी हैव 2 इवेंट लिसनर्स, और हमने 2 फंक्शंस बनाया था, दोनों में काम सेम था, बस एक की प्रेस डिफरेंट था। वहां हम एक दूसरे क्लिक इवेंट को फायर करते थे और यहाँ पे हमने एक प्रेस को फायर किया हुआ था, तो काम रिपीटेड था, बट तो हमें वो कोड जो हमने कॉपी किया हुआ है, बार बार रिपीट किया हुआ है, उसको एक फंक्शन से हैंडल करना है। तो ट्राई विथ योर ऑन, अगर वो हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सो बाय गाइस। Sir, एक डाउट सर। सॉरी, यस सर। Good night, sir. Sir, in VLS code a small dot, sir. Can I share screen? Yeah. Okay, I have to share my screen. Sir, it's me, sir. I have to Okay. share. Okay, please. Yes, you can. Yes, Keshav, you can share. Sir, it's not working. I'm trying it, sir. I have already stopped my screen. Yes, Ranjit. Tell me. Tell me. हाँ सर, मुझे सर एक डाउट पूछना था सर। अभी नेक्स्ट वीक से एडवांस मतलब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट होगा ना सर? Yes. तो सर वो अभी लाइक कैसा, क्योंकि मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो लाइक वो कैसा डिफिकल्ट होगा क्या? No, it is not difficult. Like अभी तक हमने जो पढ़ा है वो बेसिक हमने जावास्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग में हो गई है। हाँ सर। Now we can just like we can go to our next step कि हम प्रोजेक्ट्स में कैसे कैसे चीजों को डील करते हैं।
हाँ सर। तो वो चीजें हैं, ऐसे वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वही चीजें जो हमने अभी भी पढ़ा हुआ है, बस हाँ उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ेगा, हल्का फुल्का, ओके टोटली चेंज हो जाएगा। ओके सर, तो हमको प्रैक्टिस करते रहना है ये जो भी यस बेसिक आपने यस सिखाया। यस, जो मैं पढ़ाऊँ इतना भी प्रैक्टिस करते रहो, इतनी भी चीजों को समझ में आ जाए तुम्हें, तो यू आर रेडी टू गो। हाँ सर, ओके ओके सर, थैंक यू सर। यस यस, who is this? Sir, Keshav. Yeah, sure. Sir, my problem is when I start debugging. Why you use debuggers? अभी debuggers use करना ही नहीं है, not use of any debugger, we don't use something. In which way, sir? So what issue? Sir, this is the issue, sir. Sorry? This is the issue, sir. When I enter, this is the code, sir. Yeah. When I start debugging. Why you use debugging? Just stop it. Just stop it. Debugging. Okay, sir. Okay, sir. Now just go on the folder where all the files are. Okay, sir. Just go on folder. Sir, this is the folder. Yeah, go inside it. Yeah, just open the head file. Yeah, open this file. Okay, sir. Sir. Yeah. Okay, sir. Yeah, it's okay sir. now. Thank you, sir. Okay. Okay. So, yes, guys, hi all of you. So, Okay, sir. see you on next week. Good night, sir. Bye. Bye sir, good night. Bye, sir. Good night.